acceptance. Now, today we have been able to achieve 399th milestone in our journey of brainstorming, knowledge sharing, and the gifts of knowledge by senior to juniors. Excellent, sir. Really gratitude to all speakers, all supporters, all guides, all mentors. Due to your well wishes, this infinite journey will achieve 400th webinar tomorrow at 5 p.m. where we have invited 66 speakers, 10 scientific sessions, and 1 inaugural session. We had tried to Munjapara Sahib, but unfortunately we have not been able to catch him. But then also it will be a gala grand webinar, international wave conference. Please join tomorrow. And for today, I would like to welcome respected Vishnu Prasad Sharma ji, respected C.V. Jha sir, respected Dr. Namge Dano Tawang. Thank you for joining us today. First time, I hope. Thank you, Dr. Mohsin Delvi sir. Thank you. And our respected Waheed Sahib. Thank you. शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोग इतने कम शॉर्ट नोटिस में भी आशीर्वाद देते हैं. मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आगे भी ऐसे ही आशीर्वाद की कामना करता हूं. 400 बड़ा जल्दी चलते चलते आ गया. मैं कल एक और आप लोगों के आशीर्वाद से अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं. जिन लोगों ने हमारा साथ दिया उन्हें बेस्ट स्पीकर अवार्ड, उसमें से 100 आदमियों को हम लोग डिजिटल सर्टिफिकेट्स भेजेंगे. वो भी एक शुरुआत है आप लोगों से आशीर्वाद पाने की. और हर 6 महीने में 100 वेबिनार कंप्लीट करने का कम से कम संकल्प रखेंगे, जिससे 15-16 वेबिनार हर महीने होती रहे. रिलीफ भी मिले, रेस्ट भी मिले, गैप भी मिले और डे भी सेलिब्रेट हो. इन्हीं विचारों के साथ मैं आदरणीय विष्णु अग्निहोत्री सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो हमेशा ऐसे साथ देते हैं. मतलब शर्मा जी, अग्निहोत्री सर बरसों से साथ दिए जा रहे. आदरणीय विष्णु प्रसाद शर्मा जी को मैं भूल नहीं सकता. जब हम लोग शुरू किए थे तब से विष्णु प्रसाद शर्मा जी आशीर्वाद दे रहे हैं. मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं सर. आप लोगों का सभी का बहुत बहुत आभारी हूं. मैं आदरणीय विष्णु प्रसाद शर्मा जी को स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं. रिस्पेक्टेड विष्णु प्रसाद शर्मा जी, फॉर्मर प्रिंसिपल, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज गुवाहाटी एंड प्रेसिडेंट विश्व आयुर्वेद परिषद असम. वेलकम सर, वेलकम. Namaskar. Good evening to everybody. Respected Professor C.V. Jha, respected Professor V.K. Agnihotri ji, respected Dr. Pawan Kumar Sharma ji, distinguished guests, ladies and gentlemen. Today we have one evening webinar on vitiligo, care and cure by Ayush. It is the most important subject. Disease is available in not only in India, all over the world. But specific medicine is till now not available. Yes, some medicine shows very good result. Today we have very prominent, eminent speaker. Number 1, Padma Shree, Dr. M.A. Waheed. I welcome sir for this evening webinar. Next, Dr. Ruchi Tiwari from VARANASI. I welcome you to this evening webinar. Dr. Tejendra Singh from DEHRADUN. I welcome you in this evening webinar. Next, Dr. Neha Garg from KOLKATA. I welcome you in this evening webinar on vitiligo, care and cure by Ayush. So I, Professor Dr. Vishnu Prasad Sharma, consultant come professor,
Government Ayurvedic College, Guwahati. Welcome all the eminent speaker, distinguished guests, ladies and gentlemen, to this evening webinar on vitiligo, care and cure by Ayush. Namaskar. Over to Pawan ji. Thank you, sir. Thank you very much. We have legendary Rasastri Professor C.V. Jha, sir. So for his initial blessings, and then we will request our first speaker, Dr. Waheed, sir. So C.V. Jha, sir, welcome, sir. नमस्कार सभी लोगों को मेरा नमस्कार और जितने भी वक्ता आज के विद्वान वक्ता हैं सभी लोगों को मेरी ओर से अभिनंदन स्वागत। जैसा कि आज का विषय है, हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में हर देश में प्राय करके इसका फैलाव है और किसी क्षेत्र में अधिक, किसी क्षेत्र में थोड़ा कम। और एक ऐसा ये व्याधि है जो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, विशेष रूप से मानसिक रूप से अधिक परेशान करता है। तो बहुत सारी इसकी चिकित्सा रेमेडी भी उपलब्ध हैं और काफ़ी अंश में देखा जाता है कि लोग इसको दुरुस्त करते हैं, सही करते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के जो भी विद्वान वक्ता हैं इस विषय पर जो अपना विचार रखने वाले हैं उन सबका अभिनंदन करते हुए आग्रह करता हूं कि कार्यक्रम को आगे बढ़ावें। धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब रिस्पेक्टेड पद्मश्री डॉक्टर एम ए वहीद सर को आमंत्रित करता हूं। ही चेयरमैन ऑफ साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी CCRUM Hyderabad, and really his CV is so long that he is dignitary of Unani sciences. I would like to welcome respected Dr. M. A. Waheed sir. Welcome, sir. Welcome. Now stage is yours. Ji, thank you very much, my dear, all the stalwarts of the Ayush systems of medicine from different parts of the world and in general and different parts of the country. My dear friends, as we all know that today we are celebrating the International Vitiligo Day in order to create awareness about vitiligo. As we all know, the most of us are the clinicians from the different parts of the world, systems of medicine. All systems of medicine which belongs to under one umbrella of Ayush. And since as we are all clinicians, we are all aware that the main problem with the vitiligo is a cosmetic disfigurement. And this cosmetic disfigurement caused by a presence of depigmented macules on the visible areas of skin. And no, you know, since it's just a cosmetic problem that will lead to social isolation, psychological embarrassment, depression, and denial of the first line jobs and denial of the matrimonial alliance. So this is the condition associated with tremendous social stigma. And this social stigma, tremendous social stigma, is available in spite of the absence of the serious medical connotations. As we know, vitiligo is not seriously ill to the patients, but in spite, it is more, has an impact on the psyche of the patient. Am I audible to everyone, please? Yes, clear, loud and clear, sir. Yes. So in spite of the lack of the serious medical connotation, because we all know that this is not the case of the myocardial infarction. It's not the case of the other conditions which threaten the life. But in spite of that, in spite of the lack of serious medical connotations, this is one of the conditions associated with those associated with tremendous social stigma because of the depigmented lesions over the body, especially on the exposed areas. As we all know that the majority of the cases gets vitiligo. According to the statistics, 50% of the patients of vitiligo develop their full vitiligo picture before their early adult life. And the 70% of them, they develop within the vitiligo patients, they get before attaining the third decade of life. So this is the individual's life, is golden life, will suffer because of this depigmentation, which will cause their
depression, social isolation, which will lead to the social isolation. Now, the psychology of such an individual having problems with vitiligo begins in the process of the development at the younger ages, when person starts developing the self-image. Element of dysmorphophobia of the fear or self-image is common in these persons. From denial, apprehension, self-doubt, anger, depression, self-esteem, loneliness, and guilt to pathological manifestations of clinical depression and adjustment disorders are also sometimes observed. Now let us know what happens histologically in vitiligo. Histologically, vitiligo is characterized by the loss of melanocytes with diminished or absent activity of the melanocyte tyrosine or the melanin pigment precursor, that is DOPA. When we see the prevalence of vitiligo worldwide, around 0.5% to the 1% of the world population is suffering from vitiligo, and around 2 billion people alone in the United States of America, and 3 to 4% of the Indian population do have vitiligo. And among the Indian population, the higher incidence of the coastal belt of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat are reported than the non-coastal belt. When we talk about the sex ratio, male and female sex ratio is already equal, 1:1 is affected. The most interesting factor is age at onset, at which age the development of patches takes place. The age at onset among 20 to 30 years, and 50% develop their full clinical picture before attaining their early adult life. This is the life where the dysmorphophobia and self-confidence shakes. A disorder consisting of areas of macular depigmentation, commonly on extensor aspects of extremities, on the face or a neck or the skin of the folds, involving unilateral, bilateral, and sometimes bilateral symmetrical in distribution. These distribution, unilateral, bilateral, symmetrical, and symmetrical, is differ from person to person with respect to the different types of vitiligo. So that I will be covering in the course of my lecture. Emotional distress, discrimination are usually associated with vitiligo patients. Now let us know what is the etiology, what it causes the depigmentation of the vitiligo. That is still an enigma. So it's not clear. So there are many theories postulated in the causation of vitiligo. The most common among that is autoimmunity. And we know there are many types of vitiligo. Each type of vitiligo differs from each another, and all the white patches are not same. Since there are different types of vitiligo, each type has its own cause, own somatic appearance, where it comes into the body. The distribution pattern differs from that. So autoimmunity is one factor which is postulated. The second is autocytotoxicity and neurogenic factor. Genetic factor is also played an environmental factor too. In our studies, only 13% of the patients do have a genetic link in developing the vitiligo, but the 87% do not have any genetic link. That will lead to probably the postulation of the concept of autoimmunity in development of vitiligo. Above all, environmental factor plays a vital role in the development at the particular place, particular age too. Let us know the classification. There are few classifications are given. The most common, which is given with the Sir, you are muted. Kindly unmute yourself, sir. Localized and generalized vitiligo. So among the localized vitiligo, there are two types: segmental vitiligo, always unilateral. It affects the area supplied by a nerve, and the mucosal vitiligo, which affects only the mucous membranes like lips and other body orifices around the body orifices. Another type is broadly classified as general vitiligo, which comes as acrofacial vitiligo. Acrofacial vitiligo affects the lips and the acral areas of the body like fingertips, toes, palms, feet, sole. These are the common acrofacial areas. This is always ascending in nature. It never descends, but it ascends. So it affects the downer areas, then it slowly ascends. And second is a non-dermatomal vitiligo. Non-dermatomal vitiligo is a generalized vitiligo. It has a bilateral, symmetrical, or bilateral asymmetrical, or sometimes bilateral, symmetrical mirror image appearance. And if it's not treated, or even treated is not controlled the further spreading, that will lead to the vulgaris, vitiligo vulgaris. That is generalized vitiligo, where we see the entire
pigment loss of the body. There is an importance of the early aggressive treatment for vitiligo. As we all know that 50% of the patient develop vitiligo before their early adult life. So disease onset is younger ages, among major of the patients. So the control of the further spreading, or we can call as a galloping phase of vitiligo, is very important, has an immense role. And second, the overcoming the resistance phase. You know why there's a course of the overcoming the resistance phase. As we all know that vitiligo being a stubborn disease, which needs a prolonged treatment, usually the subjects are treated, or persons with vitiligo are routed through with the different treatment pathies, but in vain, in order to get remedy, but in vain. So they develop the resistance against the various treatments. So there is a need to overcome that resistance created because of the previous treatment. If the resistance is not overtaken, in spite of a very radical treatment which have, the satisfactory results cannot be achieved. And of course, the third is to induce and accelerate the rate of repigmentation. It is everybody's wish to induce the repigmentation, and that should be accelerated as fast as possible. Sometimes, for example, when we talk about the patients and the doctor's perspective, the patient we start treating vitiligo and 70% of the patients patches are regained and 30% are not regained. The vitiligo 30% remains to be a vitiligo. The stigma attached to the vitiligo will remain as a stigmatized. So there is a need to have an integrated approach in order to get a cosmetically acceptable repigmentation. There are few thrust areas in the development of vitiligo. The first is since it's an autoimmune disease, it is a safe drug and a very specific drug and potent drug development in relation to the galloping phase to control the active phase of the vitiligo, where the disease is very fast spreading and where aggravation of the lesion indicates that the stage is an active vitiligo. And there's an ample need to develop the immunomodulators, both systemic and topical application, immunosuppressants too for topical application. Vitiligo being a stubborn disease requires prolonged treatment. Generally during this treatment, patients acquire the resistance to overcome the course. There is an ample need for specific drugs to overcome this resistance phase. And there is a need of the melanogenic drugs, new to formulations to induce and accelerate the rate of pigmentation. When we see really before putting the patient on the treatment, planning for a medical management, we need to know the etiopathogenesis of the vitiligo. As we talk, there are several postulated hypotheses: autoimmune hypothesis, neural hypothesis, and cytotoxic hypothesis. Among the patients with the autoimmune vitiligo, this is always active. That is called another classification given as V1, V2, V3. V1 is an active vitiligo. V2 is a quiescent or stable vitiligo. V3 is improving or repigmenting vitiligo. So depending on these type of vitiligo, immune or progressive vitiligo is a vitiligo, non-dermatomal vitiligo. Clinical picture is a non-dermatomal or vitiligo vulgaris. And neural hypothesis leads to the development of the segmental vitiligo, where we have seen one half side of the face is a normal, half is a affected, depigmented. That is because the depigmentation is in the area of supplied by a nerve. That is a segmental vitiligo. It is always unilateral vitiligo or localized vitiligo. When we talk about incidence, 70% of the cases are of vitiligo, non-dermatomal vitiligo, around 11% are neural vitiligo. And there's a new concept has been observed that there's an emerging type of vitiligo that is called contact vitiligo, chemical contact vitiligo, because of the use of poor quality cosmetics, poor quality recycled plasticware. So wherever this come in contact with that will lead to the depigmentation. So this is one of the fastest growing type of vitiligo. So when we talk of the vitiligo management, the patient selection is more important because every patient is a new challenge to the doctor. We need to see why and which therapy is to be given, because if the disease type, we need to see the type of vitiligo, site of the lesion, and site of lesion is more important rather than extension of the lesion. There's certain parts of the body which are very resistant to treatment, like lips, mucous membranes, acral areas like fingertips, sole, toes, feet, palms, etc. But the rest of the body parts are very good areas, supposed to be very good areas to get back the repigmentation. So we need to see the patient selection, which type of vitiligo, and distribution pattern, and the site of lesion. Site of lesion is
the extension of lesion is not considered. How big is hardly it matters for a physician, but the site of lesion is more important. I will give an example. When the entire face is white, including the lips, entire face may repigment in a year and a half time maximum. But lips doesn't take up the color. So when we talk of the cosmetically acceptable repigmentation, entire face is repigmented. We say as a physician that our drugs are very effective to the 80-90%. We have able to treat the vitiligo to regain the pigmentation. But when we see the patient's perspective, a 10% vitiligo lesion or the 20% of the lip equation, still there's a stigma that will lead to the denial of the young age social behavioral changes and resolutions are usually associated. So medical management is very important, irrespective of the type of vitiligo, site of lesion, extension of the lesion. And in such cases where 80% is required, which I was talking, then surgical intervention can be done. That is called an integrated approach, melanocyte transplantation, which is being successful nowadays, very successfully, and that is excellent to do better. And you need to have sometime adjuvant therapies and to control the drug sensitivity. Drug sensitivity is very important in vitiligo or Ayush drugs which we treat. So, and because of the sensitivity, as we all know, the pigment metabolism, melanin is a protective screen against the hazards of sunlight. When it is lost, that area becomes sensitive to the solar irradiation. When we apply the medicine exposed to sunlight, sensitivity issues can come like itching, burning, sensitive issues to the blister formation. Sometimes to control that drug sensitivity, we need softening agents. And sometimes we need some medicines to apply over the patches to absorb the sunlight more sometimes. That is called tanning agent. And the tanning agents are also of two types. One is a reversible and irreversible. So reversible tanning agents are always applied and you can do it, but irreversible is not more required. And the selection type, so in a nutshell, the selection of therapy is based on the type of disease, state of the disease. The state of the disease means again, like a classification I told, V1, V2, V3, that is active vitiligo, quiescent or stable vitiligo. The definition of the stable vitiligo is for the last at least 6 months, either there is no new patch or existing lesions are not increasing in size or the resistant vitiligo. So the assessment of the disease activity is more important. Assessment of disease activity is more important to start before starting the treatment. It's necessary to make an assessment of the disease activity prior to the initiation of the treatment. As this is essential in vitiligo vulgaris, as the disease activity fluctuates from time to time. Medical treatment may be equally effective in active and stable disease, whereas surgical methods are suitable only for patients with stable disease. So in other words, we need to have a medicine to control the further spreading to make it stable. Once it is become stable, is as good as preparing a good 20-20 match pitch, which is result oriented. If it is really stable, is not repigmenting, we hardly bother about that. If it is really stable, then we can apply a surgical method and direct pigment cell transplant can be done in a very shorter time. We can translate it through gross repigmentation, then that will bring smile to the patients. That is the essence and the message of the today's seminar. So there seems to be no consensus regarding the clinical evaluation of the disease activity in vitiligo. So definition of active or stable vitiligo seems to be different from different clinicians. As experimentally produced Cabno's phenomena may be a clinical sign used to assess the presence of disease activity and also predict the responsiveness to the medical condition like vitiligo. So most important thrust areas is to control the galloping phase, that is active vitiligo, to induce and accelerate the rate of pigmentation. Besides the emerging trends in the management of problem, the tanning agent, and the third and last is the camouflage. The use of the camouflage is nothing but a cosmetic or a masking procedures. And since we in a day-to-day practice, we see many doctors across the world ask patient to use camouflages as and when required when lesions are in exposed areas. But we know the younger population, we don't advise because these are all chemical based and that will destroy the pigment melanocytes there. So repigmenting process will be hindered.
there will be hindrance into the repigmentation process. So we advise only to the elderly patients, those who do not want to have a prolonged treatment. They can, working ladies, for example, so they can use the camouflages and work off during the functions, they can use as and when required in the public meetings. So otherwise, commonly it is not very much encouraged. So need of integrated approach. When this integrated approach can be done, it is done only once disease becomes stable. Again, I will repeat, as I told, the stable definition of the stable vitiligo is there is no patch on the normal skin for last 6 months and the existing lesions are not increased size. Then we can do is, or we can call it unyielding macules, and we do a surgical intervention that can be done very easily. So in a nutshell, need to have a greater role in development of the skill and the clinician's part to control the patient, to properly diagnose the vitiligo, to ascertain the type of vitiligo, to assign the distribution pattern, extension pattern of the vitiligo, the site of the lesion, then decide the role of therapy, like a particular formulation to control vitiligo process, to control the repigmentation, to induce the repigmentation, and to accelerate the repigmentation, and to safeguard the patient's vital organ. That means we need to monitor the patient to time to time see, to do the enormous study at least once in 3 months, initially at once in 3 months, the clinical safety in terms of sensitivity issues and the blood workup to liver profile, kidney profile to see the safety of the drugs. So these are the few things. And in addition to that, since 25th June is being celebrated or organized at a Vitiligo Day in order to create the awareness of the vitiligo problem. Since it's a psychological effect on the psyche of the patient. So the magnitude of this problem can be highlighted with the fact that the patients are vitiligo are denied us of sponsorhood, first-line jobs. We need the public interaction leading to the social isolation. Since the patient with vitiligo has a unique or specific situation among the many possibilities which is characteristic in this complex disease. So there's a need to focus on two issues. One is combating the origin of disease, and the other is to induce repigmentation. The one is combating the origin of disease means to make the patient stable, to know the cause and make it stable. Second, to induce the repigmentation. So the role of various single and compound Unani formulations, the management of vitiligo is well documented in the classics of text of Unani medicine. The text is replete with the references of the safety and the efficacy of various drugs in the management of vitiligo, which are being practiced clinically over the centuries. So we have studied some formulations which are already documented by the physician specialists in the Unani system of medicine under the guidance, and these are taken off under the guidance of the Scientific Advisory Committee of Central Council for Research Unani Medicine. So we have done studies at Central Research Institute of Unani Medicine. Based on work over 4 decades on vitiligo research, this center is elevated by Government of India, Ministry of Ayush, Government of India, to the next level of, from Central Research Institute of Unani Medicine to the National Institute of Unani Medicine for dermatological disorders. So these are the few very important things which I wanted to highlight. And my message to the patients is, please do not bother. Please do not have a social isolation. Please do not take it very serious, because new knowledge, new development, therapeutic modalities, new surgical methods are available now. New skills with the clinicians are available now to tackle your problem, to treat you, to induce a cosmetically acceptable repigmentation, and to create a smile on your face. That is the real work for all of us. The response, I was talking that we have been treated, the response, this response to the therapy shows a considerable interpatient variability. The greatest challenge facing the physician is to predict the outcome of the treatment in form of rate and percentage of repigmentation on depigmented macules. And the most important thing on with the physician's perspective, in the absence of the reliable laboratory indicators, it becomes important to recognize the certain clinical parameters of vitiligo that can determine the response to treatment in a given patient. That means
If the disease is very active, there is no medical test to see the quantum of the disease, active disease phase in the body. So that is something very important. So nothing can be done except a detailed clinical examination, good counseling, and good line of management. So a physician's moral obligation is to offer to each patient the best available treatment. However, this force must be not only the protective but also the constructive force for redesigning the good medical care, not only in India but across the world, and promote these systems to reach to the outside of the Indian boundaries. So for that, we need to have a well documented with the scientific relevance to these systems, so that these systems get an affiliation with the World Health Organization, get an affiliation with the US FDA, so that they can endorse your work in terms of both safety and efficacy of these studies. Probably that will lead to the larger level of the population across the world, and treat vitiligo with a great success. Thank you very much. I'm really thankful to the organizers for giving me the opportunity to be a part of this today's celebrations. And in order to give my message to on this particular day is there is a great hope of treating vitiligo with a great success, and inducing cosmetically acceptable repigmentation is always a ray of hope. Please confine to the good doctor, understand the doctor's advice, take a treatment, take advice, follow the diet restriction till you recover, and hope you will remain normal and cosmetically acceptable repigmentation. With these few words, I'll take leave, and I'll be very thankful to the all the vitiligo community across the world who has engaged in creation of awareness on this particular day, including the organizers of this conference. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much for your blessings, full of guidance and inspiration. No doubt you have worked on vitiligo. What I have heard with Dr. Munsiji and Delviji, that you have already worked for vitiligo for decades. Yes. Researched on the subject. Yes, we are really grateful to you that you have inspired us a lot. Before calling Agnihotriji for comments on the speech, I would like to request Mohsin Delviji for his comments. Mohsin Delviji, Chairman, World Unani Foundation. Welcome. Thank you, Pavanji. Waheed Saab is a known figure, and yes, he has specialized in vitiligo. Since I've joined this system in the 80s, I've heard of this institute where he was in charge, and I had the opportunity to meet him quite often, twice at his institute. And yes, it is one of the, I think, the best institutes for vitiligo. And many of my known people who come to me, for this treatment, I recommend them to go to Hyderabad, or if not possible, then to go to their RRIM in Okla in Delhi. So I think Unani is one of the best systems where we have a cure. I think allopathic has failed in this, and definitely we do have a cure, and Waheed Saab is an expert on this, and he's given a very good lecture on this. So I cannot say anything except that, yes, he's the best. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Respected Agnihotriji, former HOD Department of Swasthavritta, Uttarakhand University. Welcome, sir. Thank you, sir. Welcome. Thank you, Shamaji. Namaskar. Our namaskar to Muhammad Abdul Wahid sir and Mohsin Delvi sir also. Wahid sir very naturally made all justice to provide us knowledge instead of giving any others. Provide us knowledge on this particular day and on particular disease, because he is the supreme power to speak on this topic, as he has got a decades-long experience. And very naturally, he sent a clear message that don't bother. The simplest message he can communicate to all the persons, those who are healthy or those who are having this type of problem, declaring it as it is a simple social stigma.
It is not an infectious disease. It is hardly runs in generations, say 20%, as you told. Rest 80% is acquired. It may be case of burn, or it may be chemical, mechanical, smoking. So many things are there, but your message is very clear that you need not to worry. Let us have a super hand of Unani medicine system for the warding of the mental agony of the patient. Had there been a cosmopolitically whole whitishness, no problem, because it becomes in a form of patches, and that too on face, which is the beautifying and the social value of a person, male or female. So that affects a lot. That's why you told that it is a cosmetic problem and pertaining to our social stigma. So your approach is very good. We have got also some medicines in our Ayurvedic system of medicine, and when the time will come, we will discuss on those points. But you, I also having a great privilege to now speak over a person who has got the fullest and supreme proficiency on this subject, and having been ornamented with Padma Award as you are Padma Shri. It is my greatest pleasure that I am making some remarks on your comments. So I am really feeling privileged and proud of it. Thank you, sir. Thank you. So kind of you. Thank you. Thank you, sir. Thank you very Over much. to Thank you very much. Ji, sir. Now I would like to request Dr. Tejendra Singh. He is Ayurvedic physician and Department of Swasthavritta and Yoga, Ayurvedic College and Hospital, DEHRADUN. So welcome, Dr. Tejendra. Welcome. Now stage is yours. Has he joined? He was making some request that he may be late because of some urgent work. He has joined. He has joined. Okay, okay. Then. Dr. Tejendra, am I audible to you? Hello, sir. Good evening, sir. Good evening, all of you. Welcome, welcome. Good evening, everyone. My name is Dr. Tejendra Singh, Department of Swasthavritta, DEHRADUN, Uttarakhand. Today we are discussing about Vitiligo, World Vitiligo Day, 25 June. Vitiligo is a social taboo nowadays. Generally, vitiligo or leukoderma, we call. Hello, am I audible? Yes, very loud and clear. Not Okay. visible but audible. Sir, vitiligo or leukoderma, in modern Western medicines, the condition is known as vitiligo or white skin patches, or just earlier sir described about vitiligo. In Ayurveda, the condition is known as Switra or Kilas or Swetakust. Generally, causes of leukoderma according to Ayurveda are irregular lifestyle, improper hygiene, and main thing is inappropriate food combinations. Stress and sudden emotional trauma are also biggest factor for leukoderma or vitiligo. This leads to autoimmunity. So for nowadays, lot of people are in our OPDs, in our daily life. We can see the peoples with leukoderma patches. So it's become they are mostly concerned regarding their cosmetic issues. So in Ayurveda, first we recommend them like a proper healthy diet and lifestyle. If they will follow proper dinacharya and ratricharya along with ritucharya. And we also advise them good food combinations. Some few combinations are very bad, like many people already knows non-vegetarian food along with milk. And along with that, we also suggest people who have leukoderma, first we recommend some panchkarma therapies for just detoxification. Then we also recommend them few Ayurveda medicines. And it takes few times, of course, when we suggest someone for leukoderma treatment, so we suggest them
3 to 6 months treatment protocol, some paste application, and some syrup and some ointment application. It takes time. Recently, DRDO, Defense Development Organization, and one pharma company made one combination, one liquid and one ointment for curing vitiligo by Ayush method, by Ayurveda treatment. And many patients are also getting treatment. If they have like a patches, so it's becoming slow. If it takes time, months to 3 months, 6 months. Some patient it takes time for 1 to 2 years also. But by Ayurveda medicines and purification process, definitely patients got the results. And according to Ayurveda, a main reason is inappropriate food. Sometimes we have junk food habits. Sometimes we have a lot of stress nowadays. Everyone have. So if you will, main thing, if you will tell everyone, to just make this vitiligo as a like a normal thing. It's not a communicable disease. It can be curable. It can be manageable. It can be we can spread the patches with proper guidance. Main thing, people's generally patients and lot of in our society, people make it as a that thing it is incurable, and they just like they try to they try to hide from those people. They try to get that kind of, and those people who have vitiligo, they have that inferiority complex because of their cosmetic issues. Someone have that on their faces, those patches. So it's better we will advise, we will guide people about regarding this. It can be manageable with proper Ayurveda medicines, with proper Ayurveda detoxification therapies, and main thing, following Swasthavritta, what we can follow in our daily routine in proper dinacharya. And how can we balance the biggest factor, the stress, with proper yoga, meditation 2 times a day, along with proper Ayurveda medicines. So first thing, I can now I'm in conclusion phase. So I can say we can, main thing, people needs more the guidance and normal basic info about leukoderma. Lot of patients used to come here in many clinics. They used to say it's incurable because most of the doctors, they said in allopathy, Western medicine is incurable. It will increase, either it will be like this. So it's better we can guide people like it can be manageable. So we can recommend them few diet, few lifestyle changes they can do. They can manage their stress. And we can aware normal people, the patients who are facing leukoderma, vitiligo. Okay, this can be treatable, this can be curable, and this can be preventable. बहुत अच्छा डॉक्टर तेजेंद्र, बहुत ही अच्छा. Thank you so much, sir. बहुत अच्छा. डॉक्टर कामिनी धीमान जी को मैं आमंत्रित करता हूं. डॉक्टर कामिनी धीमान जी, नमस्कार. नमस्कार जी. नमस्कार. नमस्कार. आपका कुछ प्रश्न था, मैं चाहता था कि वो आप डायरेक्टली पूछे तो बड़ा अच्छा लगेगा. हाँ, मुझे 2 क्वेश्चंस थे इन्होंने जो बोला उसमें. एक तो ही टोल्ड कि सम योगिक प्रैक्टिसेस आर बेनिफिशियल इन द पेशेंट्स ऑफ विटिलिगो. तो मुझे ये जानना था कि कौन-कौन सी योगिक प्रैक्टिसेस हम पेशेंट्स को बता सकते हैं, व्हिच कैन बी बेनिफिशियल टू दोस पेशेंट्स. एंड सेकंड माय क्वेरी वाज दैट कि combinations of diet is responsible for vitiligo. It is mentioned in classics and we say always, but have you studied that after consumption of that diet, how many days required for that samprapti or appearance of vitiligo in those patients, and any experience regarding this that I wanted to know. These 2 questions I wanted to know. डॉक्टर तेजेंद्र. Yeah, good evening, ma'am.
Ma'am, first thing regarding yoga and pranayama things, Nadi Sodhan pranayama, Brahmari pranayama, and Sitkari pranayama, along with Kapalbhati, they also improve immunity, and they also develop new cells and remove the dead cells from the skin. So these are also helpful to maintain healthy melanocytes. So they are maintaining the normal melanin in skin and also helpful to reducing and managing the vitiligo patches. Have you studied in patients this thing, or just you are telling about? Yeah, ma'am. I saw few changes along with the Ayurveda medicines, along with Diesel the है these yogic चल के procedures. हाँ postponed Because क्या a है lot of patients along with who have this kind of vitiligo patches, they have biggest factor is stress due to their ये तो सेवा other करे वो एकदम तलवार के धार पर due to their other personal life issues, due to their job issues, and also due to the cosmetic issue they are facing in their society. So along with meditation and this pranayama practice is also helpful in this thing. This question I would like to extend to respected Mohammad Waheed Sahib, that whether in Unani they have seen any impact of food, any food or food allergy or food combination, because in our Ayurveda we generally believe that due to Viruddha Ahar, not non-compatible food items, this disease occurs. So please, Waheed sir, respected Waheed sir, have you find any impact of food item on vitiligo, or this is our belief only? Kindly unmute yourself, sir. Kindly unmute yourself. You are mute, sir. Hello. You are mute. Yes. See, I know that is an excellent question. Actually, it's related largely to the public and for our professionals also. As all of us know that it is really mentioned in the classics of Unani medicine as well as Ayurveda text. But there are two things I wanted to do. The role of, in the modern science, the role of diet allergies and incompatibility is also discussed and documented, which coincide with our text. But one example I will give you, for example, of a particular therapy, as we say, not to take together milk and fish, or some other incompatibility will create. But you know, in a given family, if 10 people are eating particular food, 9 will not suffer and 1 will suffer. What does it mean? That means that there is one whosoever have the susceptibility to develop the vitiligo. In such persons, it get aggravated, otherwise not. So in that case, when they have a susceptibility, yes, there is a role of these food allergies and incompatibilities, which is documented in the classics, has a different role. And in addition to that, during the course of the treatment and after the course of the treatment, that means post-treatment follow-ups, we always advise not to take these food combinations. Hope I'm clear. Kamini madam, I hope. Actually, I wanted to know just that, have you anyone studied about this thing or not? We have a part, see our classical text related references, we have a part of our CRF, clinical research form. So there is a case sheet. We have that, and we have enough data on thousands of patients. We have treated over 4 lakhs patients, and we have analyzed that not all will develop this, but certain percentage of the people only will get. Those who have a susceptibility. I will give you one example. If a small girl or a boy is riding a bicycle and fell down and got a hurt, there are 1,000 children getting hurt, and all are not developing the vitiligo. But one small child will get vitiligo after healing of that wound. So that is not because of the hurt, got it because of the he fell down. Because of the susceptibility, thus it speaks, there is a susceptibility to develop vitiligo. Same theory applies over here.
whoever has a susceptibility to develop vitiligo, in such cases, it becomes more aggravated and development of the patches will be more visible. And these are the document we have records in our case sheet. Yes. Thank you. Thank you. Thank you, sir. So now, Agnihotre sir's comment on Dr. Tejendra. Thank you, Dr. Pawan Sharma ji. Actually, I was just planning to comment upon the address of our Dr. Tejendra Lingwal, sir, but with the presence of Professor, the things changed, and now very naturally, Vice sir is also very much there. So now it will become a good bridge work to deal with the presentation of Tejendra, because Tejendra had been my student in Rishpur College. He is a graduate from Rishpur, and now he is doing MD from Uttarakhand College in Dehradun. So the idea is that what he has collected and projected is a very small drop in ocean, that too in front of such stalwart persons. And we have got great persons from your side, and from student side, from patient side, and from the discussion panel side. So I am just remembering one guest lecture series organized by BHU way back in 1980, and Professor Brahmdatt Sharma ji of Divya College, who came and continued 3-4 days with his lecture. And I do hope that Professor C.V. Jha might be remembering. They talked a little bit different way, as our Charak Sanghita says, especially in the chapter of Atul Gotri Adhyay Vyakhyasama. There comes a typical typology that in the same Gotra, marriages should be avoided. Otherwise, there may be some outcome in that way, because it's not, I told the infection is also. And he also quoted regarding the albinism, and that he talked about what I am remembering in the Bora community of Rajasthan, I think. They are much more suffering from the this vitiligo or leukodermal patches or so. So goes the case with the near marriages. But there is no hard and fast rule, because our ex-former petroleum minister, Mr. Santosh Gangwarji of Bareilly, you might be remembering his face. He is having a lot of, say, leukodermal patches. So I cannot say that it is in Hindus, it is in Muslims, or it is in Sikhs, or in Christians. But whatever the doctor or physician or clinician always see the face, the person, not belonging to its other things. So in that way, he pointed out these things, that apart from this near marriages, because based on the Atul Gotri Adhyay. Now, other thing is completely based upon the idiosyncratic status of the foods. When a person consumes foods which are not allowed, especially in the equal quantity of honey and this desi ghee, or chilchim fish meat along with milk, it is a great list of such type of ill combination of foods, which is known under the chapter of Sanyog Viruddha Ahar. So that chapter complies full of the, say, permutation combinations, and its results in the form of the leukodermal patches. So Dr. Kamini Dhiman is intelligent enough and academician one who can well understand. And as far as this pranayam, nali shodhan, this Bhastrika, these are the after remedies we can involve the patient to go for doing this. It is it will take much more time, say 400 or 500 patients, that too repeatedly in a 1 month, 2 months, 3 months of duration. Then only the data can be filtered, and an inference can be made that this also helped. The Bhastrika Pranayam also helped, or something also helped. So database declaration is a tedious job. It's not so easy job. But as far as the idiosyncratic effect of the ill combination of food might have got some base. So this is my submission, and Dr. Lingwal is supposed to go further
for his experience and studies to deal with, since he is taking care of this thing, and we are celebrating the Ayush approach towards the vitiligo management and care. So it may be a long way. It's not a short term that we can say and it will happen. Number of medicines of Ayurvedic system are there, which when the time will come, I will discuss on this. So thank you very much. Thank you, Dr. Pawan Sharma. Over to Dr. Pawan Sharma. Thank you. Thank you, sir. Now I would like to request Dr. Neha Garg. Dr. Neha Garg is brilliant next-gen dynamic doctor here in Kolkata. She is taking care of the Ayurveda clinic also, and she is research fellow in CCRUM here, recently appointed. Welcome, Dr. Neha. Welcome. Please unmute yourself. Pranam, sir. Very good evening to all dignitaries on the screen and off the screen. मैं सबसे पहले सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ, पवन शर्मा सर का, कि उन्होंने मुझे फिर से एक अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अपने आप को एक बार फिर से प्रेजेंट कर सकूं। हालांकि मैं इस पूरे टीम में, इस पूरे पैनल में सबसे जूनियर मोस्ट हूँ, लेकिन फिर भी सौभाग्य की पात्र हूँ कि मैं आप लोगों के सामने कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। तो मैं भी शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। Sir, is it visible, sir? Sir, yes, very clear. Very clear, very clear. Yeah, go on. Thank you, sir. So today is 25th June and we are again celebrating one more day of this year, vitiligo, and I am here to discuss about care and cure taken in vitiligo patients by Ayush department. So myself, Dr. Neha Garg, MD Kaya Chikitsa. These are the presentations of vitiligo patients. I'll be discussing further. श्वेत और विटिलिगो हम मॉडर्न मेडिसिन में हम बोलते हैं इसको। विटिलिगो इज अ डिसीज दैट कॉजेज द लॉस ऑफ स्किन कलर इन ब्लॉचेस एंड इट अकर्स व्हेन पिगमेंटेशन प्रोड्यूसिंग सेल्स डाई और स्टॉप फंक्शनिंग। जो मेलानोसाइट्स होते हैं हमारी स्किन में, वो या तो हाइपो फंक्शनिंग हो जाते हैं या फिर वो मर जाते हैं, जिसकी वजह से हाइपोपिगमेंटेशन या डीपिगमेंटेशन स्किन में स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम आयुर्वेदा साइंस को देखें तो हमारे आयुर्वेदा में श्वेत्र टर्मिनोलॉजी दी गई है विटिलिगो के लिए, या कह सकते हैं श्वेत्र को विटिलिगो टर्मिनोलॉजी दी है मॉडर्न मेडिसिन में। श्वेत्र इज अ डिसीज वेयर व्हाइट पैचेस अपीयर इन होल बॉडी। और हमारे यहाँ जो वात पित्त कफ दोष का कैटेगराइजेशन है, तो स्किन के लिए भ्राजक पित्त रिस्पॉन्सिबल होता है स्किन के कलरेशन के लिए। तो जब भ्राजक पित्त में कोई विसिएशन हो जाता है तो जो स्किन की छाया होती है, जो छाया होती है वो कहीं ना कहीं डीपिगमेंटेड या हाइपोपिगमेंटेड हो जाती है, उसका कलर का भी विशेषण हो जाता है। तो इम्पेयरमेंट ऑफ भ्राजक पित्त एंड वात दोष कॉजेज श्वेत कुष्ठ। इट इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू विशेषण ऑफ त्रिदोषा। इसमें आयुर्वेदा में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ दोषाज ही नहीं होते किसी भी डिसीज को कॉज करने के लिए। दोष, धातु, मल, श्रोतस, अग्नि, ये सारे फैक्टर्स कंबाइंडली जब विशिएट होते हैं तब हमारे को कोई डिसीज होती है। तो अगर हम विटिलिगो की या श्वेत्र की बात करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स इसमें भी इन्वॉल्व हैं जो कि डिसीज कॉजिंग है, जो कि हाइपोपिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर हम वात पित्त कफ में से देखें तो वात और पित्त रिस्पॉन्सिबल है, और पित्त में भी भ्राजक पित्त रिस्पॉन्सिबल है। अगर धातु को अगर हम देखते हैं तो रस, रक्त, मांस और मेद, ये चार धातु स्पेसिफिकली विटिलिगो के लिए या श्वेत्र के लिए आचार्य चरक ने बताई हैं। लेकिन अगर हम कुष्ठ चिकित्सा देखते हैं, ओवरऑल जो स्किन डिसीजेस देखते हैं, उसमें सप्त धातुओं का विशेषण होता है। लेकिन हम विटिलिगो या श्वेत्र की बात करते हैं तो मेनली ये चार जो धातु हैं वो विशेष होती हैं। इसका निदान है आहारज, विहारज, मानसिक या फिर मिसलेनियस या अदर्स, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि विटिलिगो को कॉज करते हैं। जैसे कि आहारज में अति सेवन, मिथ्याहार और विरुद्धाहार। अति सेवन मतलब कोई भी आहार का अगर हम अति सेवन करते हैं, चाहे वो हेल्दी ही फूड क्यों ना हो, अगर हम मात्रा से, मात्राशित अध्याय में भी बताया गया है, अगर मात्रा से अधिक अगर हम आहार खाते हैं
तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मिथ्या आहार खाना मतलब कि एक्स्ट्रा कोई भी जैसे रसों का एक्स्ट्रा सेवन करना, या बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाना, बहुत ज्यादा तला हुआ फैटी और ऑयली फूड खाना, तो ये सब चीजें मिथ्या आहार में आ जाती हैं। विरुद्ध आहार के बारे में अभी हमने बहुत सारा डिस्कशन किया ही है। 18 तरीके के विरुद्ध आहार बताए गए हैं चरक संहिता में, और संयोग विरुद्ध, वीर्य विरुद्ध, इस तरह से करके परिहार विरुद्ध, बहुत अलग अलग कैटेगरीज में उसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। तो जैसे कि घी और मधु का अगर हम इक्वल क्वांटिटी में अगर सेवन करते हैं तो वो विरुद्ध होता है, वो पॉइजन की तरह काम करता है। चिलचिन मछली भी जैसे सर ने बताया कि मिल्क के साथ अगर हम लेते हैं तो वो विरुद्ध का काम करता है, वो विरुद्ध आहार है, उसको नहीं लेना चाहिए। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, हम लोग मैंगो शेक पीते हैं। मैंगो अम्ल अम्ल जो है, अम्ल को भी दूध के संग नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैंगो शेक जो है वो बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड ही कह सकते हैं कि हम बनाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो विरुद्ध इसलिए नहीं होता, अम्ल को हम दूध के संग मिलाते हैं लेकिन हम उसमें चीनी भी डाल देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो उसकी अम्लता होती है वो कम हो जाती है डेफिनेटली, तो वो विरुद्ध का काम नहीं करता है। लेकिन अगर हम चीनी ना डालकर, उसमें मधुर रस ना देकर सिर्फ आम को या खट्टे आम को दूध के संग लेते हैं, वो भी एक विरुद्ध आहार है। तो वो चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। विहारज निदान की अगर हम बात करते हैं, दिवासक में सर्वदा हमें मना किया गया है, रात्रि जागरण मना किया गया है, दिवास्वप्न मना किया गया है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसमें हम कर सकते हैं दिवास्वप्न। वेग विधारण, बहुत सारे जो 13 वेग विधारण बताए गए हैं, धारणी और अधारणी वेग के अध्याय में हमें बताया गया है कि कौन कौन से वेगों का धारण करना चाहिए और कौन कौन से वेगों का धारण नहीं करना चाहिए। तो जो अधारणीय वेग है, अगर उनका वेग धारण हमने किया है तो डेफिनेटली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दोष, धातु, मल, अग्नि, इन सब का, वो कहीं ना कहीं विशिएट होता है। अतिश्रम करने से, संताप से, एक्सेस मतलब बहुत ज्यादा धूप में बैठने से, बहुत ज्यादा हवा लेने से, इन सब का भी सेवन करने से जो दोष, धातु, मल है वो विशिएट होते हैं और वो डिसीज का एक कारण बन जाते हैं। चिकित्सा वैषम्य, जो पंचकर्मा ट्रीटमेंट्स बताए गए हैं, हालांकि वो बहुत ही ज्यादा सर्वोपरि है, मतलब सबसे अच्छे हैं। पंचकर्मा अगर करा दें तो फुल बॉडी का शोधन हो जाता है, बहुत सारी डिसीजेस से हमें निजात मिल जाती है। लेकिन अगर वही पंचकर्मा हम गलत तरीके से करा देते हैं, या हम उसमें जो वो उसमें जो फॉलो करने के लिए रूल्स बताए गए हैं कि बिफोर एंड आफ्टर पंचकर्मा, पूर्व कर्म और पश्चात कर्म, अगर हम प्रॉपरली फॉलो नहीं करते, या फिर हम जो प्रधान कर्म है उसमें कोई गलतियां कर देते हैं, ड्रग देने में, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, तो चिकित्सा वैषम्य के अंडर आते हैं, जो कि वो डिसीज को सही करने की बजाय डिसीज को उत्पन्न कर देते हैं। कुछ मानसिक कारण होते हैं, जो स्ट्रेस फैक्टर डेफिनेटली, और स्ट्रेस फैक्टर को चरक में बहुत अच्छे से उसको कैटेगराइज कर दिया गया है। भय, शोक, क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, मोह, लोभ, ये सब चीजें इनका बहुत ज्यादा जो प्रैक्टिस करते हैं उनको भी डिसीज कॉजिंग फैक्टर्स, ये डिसीज कॉजिंग फैक्टर्स है, उनको डिसीज डेफिनेटली होती ही होती है। अदर्स में अगर हम देखें तो ये कुलज और पाप कर्म। कुलज निदान बताया गया है कि ये हेरिडिटरी होता है, जैसे कि सर ने बताया था कि बहुत ज्यादा नहीं होता है, 20% केसेस में ही होता है, लेकिन हाँ होता है ये कि हेरिडिटरी होता है, फैमिली टू फैमिली रन करता है डिसीज। पाप कर्म तो फिजिकली तो हमें वो होता ही है, डिसीज होता ही है, इससे मानसिक प्रताड़ना भी होती है, खुद दूसरे की भी और अपनी खुद की भी। जब हम गंदा बोलते हैं, गंदा सोचते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम दूसरे को ही हार्म करते हैं, कहीं ना कहीं अननोइंगली हम अपने आप को भी हार्म कर रहे होते हैं, और जिसका कारण हमारी संहिता में बहुत अच्छे से बताया गया है कि कुष्ठ रोग की उत्पत्ति का कारण होता है। टाइप्स अगर हम देखें तो श्वित्र, आचार्य सुश्रुत ने इसको क्लास भी बोला है, और अगर टाइप्स देखें हम चरक के हिसाब से तो चरुण, ये चारुण, दारुण, श्वित्र, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, श्वित्र को, श्वेत कुष्ठ को। कलर वाइज अगर हम देखें तो कृष्ण, ताम्र और श्वेत वर्ण, और दोषिक वाइज इसको डिवाइड किया गया है वात, पित्त और कफ में। और धातु के हिसाब से देखें तो रक्त, मांस और मेघ। तो अगर रक्त में दुष्टि हुई है तो कृष्ण वर्ण का उसको श्वेत्र होगा, कृष्ण वर्ण का उसको कुष्ठ रोग होगा, और चारुण नाम से वो जाना जाता है। अगर मांस धातु तक दुष्टि अगर हुई है तो फिर ताम्र वर्ण के पैचेस बनते हैं और उसको दारुण नाम से जाना जाता है। अगर विशेषण या ये जो दुष्टि होती है अगर वो मेध धातु तक पहुंचती है
तो उसका श्वित्र जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, वाइट पैचेस की उत्पत्ति होती है और उसको हम श्वित्र बोलते हैं। और ये उत्तरोत्तर ये असेंडिंग और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ये ये होता है, गुरुता होती है इसकी, मतलब ज्यादा सीवियर होता है। अगर रक्त धातु में जो कुष्ठ हुआ है और मेद धातु में अगर कुष्ठ हुआ है, तो जो मेद धातु का कुष्ठ है उसको सही करना ज्यादा मुश्किल है, उसका प्रोग्नोसिस ज्यादा डिफिकल्ट है। श्वित इज अ पित्त प्रधान त्रिदोष व्याधि, प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज इज रैपिड, देयरफॉर नीड्स अर्ली ट्रीटमेंट। मतलब अगर अर्ली स्टेजेस में, जैसे कि क्रियाकाल भी बताया गया है, ये तो हर डिसीज के लिए ही है, पर स्पेसिफिकली इसके लिए बताया गया है कि अगर अर्ली स्टेजेस में अगर कोई भी श्वित्र का पेशेंट अप्रोच करता है डॉक्टर को, तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, उसकी साध्यता ज्यादा पॉसिबल है। इसमें ना ट्रीटमेंट्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के हम फॉलो कर सकते हैं: निदान परिवर्जन, अपकर्षण और प्रकृति विघात। निदान परिवर्जन जो अभी हमने डिस्कस किए थे, आहारज, विहारज, मानसिक या फिर जो भी मिसलेनियस सब निदान जो पापकर्म और पापकर्म हम करते हैं, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो यही अवॉइड करना चाहिए, फिर अपकर्षण, फिर प्रकृति विघात। भ्राजक पित्त प्लेज अ मेजर रोल इन रीपिगमेंटेशन ऑफ स्किन। तो हम हमारी जो आगे मैं भी डिस्कस करूंगी, जो हमारी कोशिश रहेगी ट्रीटमेंट में, हम उसमें भ्राजक पित्त को सही करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से वो रीपिगमेंटेशन करेगा स्किन का, क्योंकि स्किन में मेनली भ्राजक पित्त का ही स्थान है। सिम्टम्स हम देख सकते हैं इसमें कि व्हाइट पैचेस ऑन द स्किन इज सीन इन दिस विटिलिगो और श्वेत्र। टेक्सचर ऑफ द स्किन इज नॉर्मल, सिर्फ कलर का चेंज होता है, टेक्सचर चेंज नहीं होता है। यूजुअली इसमें कोई इचिंग या दूसरे सिम्टम्स नहीं पाए जाते हैं। और व्हाइट पैचेस जो होते हैं वो मोर ऑब्वियस उसमें होते हैं जो सन एक्सपोज एरियाज होते हैं, जैसे कि हाथ है, पैर है, मुंह है, गला है, गर्दन है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा क्या कहते हैं व्हाइट पैचेस मिलेंगे। स्किन कलर इज पांडुर वर्ण ड्यू टू प्रकुपित पित्त विशिएटेड बाय रक्त। ये हरित संहिता का रेफरेंस है कि स्किन कलर जो है वो पांडुर वर्ण का दिखाई देता है। अगर हम इसकी प्रोग्नोसिस देखें तो साध्य लक्षण और असाध्य लक्षण, अगर अभी मैंने डिस्कस किया था कि जो श्वित्र है वो त्रिदोषज है और भ्राजक पित्त उसमें मेन कंटेंट है भ्राजक पित्त और वात दोष। तो अगर श्वित्र एक दोषज होता है तो वो साध्य होगा। पैचेस फ्यूज्ड नहीं होने चाहिए। अरक्त अशुक्ल लोम, हम देखते हैं कि जो क्रोनिक पेशेंट्स आते हैं या बहुत सालों से जिनको श्वित्र होता है, उनके जो हेयर का कलर होता है वो भी कहीं ना कहीं पांडुर वर्ण का हो जाता है, व्हाइटिश हो जाता है। तो अगर अरक्त अशुक्ल लोम है, जो हेयर है, अगर वो अरक्त और अशुक्ल है, उनका कलर चेंज नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनकी प्रोग्नोसिस अच्छी है। न अति चिरोत्थित नवम, जो मतलब बहुत रिसेंटली अभी जिनको कुष्ठ स्टार्ट हुआ है, श्वित्र स्टार्ट हुआ है, अगर वो डॉक्टर्स के पास जल्दी पहुंच जाते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो उनका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है। उत्तान धातु इज इन्वॉल्व, मैंने जैसे डिस्कस किया था कि रक्त, मांस और मेद, अगर रक्त धातु तक दुष्टि हुई है तो उसका प्रोग्नोसिस अच्छा होगा, उसको ट्रीट करना हमारे लिए ज्यादा आसान है, बजाय कि मेद धातु तक अगर दुष्टि पहुंच जाए तो। असाध्य लक्षण में हम देखें तो अगर श्वित्र जो त्रिदोषज हो गया है, जिसके पैचेस फ्यूज्ड हैं, बहुत लंबे एरिया में फैला हुआ है, उसके हेयर के कलर्स भी रक्त वर्ण के हो गए हैं, बहुत लंबे समय से, बहुत सालों से उसको श्वित्र है, जो गंभीर धातु में आ गया है, जैसे कि मेद धातु में जो आ गया हो, और जो अग्निदग्ध से हो जाते हैं, जैसे भी सर ने डिस्कस भी किया था, जो अग्नि बर्न की वजह से, केमिकल्स की वजह से जो व्हाइट पैचेस बन जाते हैं, उनको ठीक करना मुश्किल होता है, असाध्य लक्षण होते हैं ये, उनका प्रोग्नोसिस बहुत खराब होता है। जन्मतः जो हेरिडिटी से जो उत्पन्न होता है ये, तो ऑब्वियसली इसको ठीक करना मुश्किल है, इसका प्रोग्नोसिस बैड है। इस ट्रीटमेंट के लिए अगर हम देखें कि हमें श्वित्र में अगर हमें ट्रीटमेंट देना है, तो हमारा सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स कैसा होना चाहिए। तो हमारी जो ड्रग्स हैं उनमें लेखन, रोपण और वर्ण प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। लेखन क्या करेगी, ब्लिस्टर्स फॉर्म करती है। रोपण प्रॉपर्टी ड्रग की उस ब्लिस्टर्स को हील करती है, और वर्ण जो होती है वो मेलानोजेनेसिस करती है। जैसे कि हमने भी बताया कि भ्राजक पित्त को रीपिगमेंटेशन करवाना, भ्राजक पित्त को स्टिमुलेट कराना, उसका विशेषण को दूर करवाना, वो ये 3 प्रॉपर्टीज जिस ड्रग्स में होंगी वो डेफिनेटली हमारे श्वित्र को ठीक करने में बहुत सहायक होंगी। मेडिसिन फॉर श्वित्र अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक,
चरक ने कुछ मेडिसिन बताई हैं, जैसे कि क्वाथ में मलबू आदि क्वाथ, चूर्ण में हपुष आदि चूर्ण, घृत में नीलिन्य आदि घृत, लोद्र आसव, मधुकासव, अभ्यारिष्ट, पुनर्नवाद्य अरिष्ट, अवले में जैसे बहुत सारे रसायन का हम सेवन कर सकते हैं, च्यवनप्राश का हम सेवन कर सकते हैं, और एनिमल प्रोडक्ट्स में अष्टमूत्र का। मेरा पर्सनल कोई इससे एक्सपीरियंस नहीं है, ये जस्ट मैंने भी पढ़ा ही हुआ है अष्टमूत्र का, ये जो हम एप्लीकेशन करते हैं, ना मैंने कभी देखा है और ना मैंने खुद किया है कभी। ये तो थी थ्योरेटिकल बातें जो कि हम पढ़ते हैं, लेकिन आजकल जो रिसर्चेस हो रही हैं, जो प्रैक्टिकली डॉक्टर्स कर रहे हैं, हम थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। रोल ऑफ चित्रक इन द मैनेजमेंट ऑफ स्किन प्रॉब्लम विद स्पेशल रेफरेंस टू श्वेत्र। ये एक स्टडी हुई है जिसमें कि चित्रक जितनी भी फॉर्मुलेशंस में आता है उसको उन फॉर्मुलेशंस को श्वेत्र वाले पेशेंट्स में यूज किया गया, जैसे कि मंजिष्ठादि क्वाथ था, चित्रकादि बटी है। बंद हो गई है नेहा जी। हेलो सर, आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, कंटिन्यू। थैंक यू सर। सेकेंड हम रिसर्च देखते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ श्वेत्र विद स्पेशल रेफरेंस टू विटिलिगो विद बाकुची चूर्ण एंड बाकुची तेल। ये केस स्टडी है जिसमें कि बाकुची चूर्ण का 3-3 ग्राम सुबह शाम सेवन कराया गया और बाकुची तेल का एप्लीकेशन करवाया गया था। इसमें अच्छा रिलीफ मिला है पेशेंट को। थर्ड स्टडी हम देखते हैं आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ श्वेत्र, केस रिपोर्ट। इसमें एक प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो किया गया है, जैसे कि ऊपर वाले में तो सिर्फ शमन चिकित्सा यूज किया था, फर्स्ट और सेकंड जो हमने रिसर्च स्टडी देखी, लेकिन ये थर्ड वाली में थोड़ा सा एक प्रोटोकॉल फॉलो किया गया है पंचकर्मा का। इसमें सबसे पहले दीपन पाचन कराया गया चित्रकादि बटी से, स्नेहपान कोई भी तिक्तक घृत लेकर स्नेहपान कराया गया, और फिर उसके बाद विरेचन कराया गया। शमन चिकित्सा में मंजिष्ठा, लोद्र, बाकुची, नागकेशर, आरोग्य वर्धनी बटी का यूज किया गया, और लोकल एप्लीकेशन के लिए बाकुची ऑयल दिया गया। इसका रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिले हैं। फोर्थ स्टडी हम देखते हैं आयुर्वेदिक अप्रोच फॉर श्वेत्र, केस स्टडी। इसमें शोधन और शमन दोनों तरीके से किया गया है ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं शोधन कैसे किया गया। दीपन पाचन चित्रकादि बटी से किया, स्नेहपान महातिक्त घृत से करवाया। इसमें महातिक्त घृत से स्नेहपान 30 ml, 60 ml, 90 ml इस तरह से कर करके 200 ml, 210 ml तक ले जाया गया था। अभ्यंग इसमें नीम तेल से करवाया गया, फिर निराग्नि स्वेद करवाया नेक्स्ट इस अभ्यंग के बाद, और विरेचन प्लान किया था। उसमें सॉरी एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, त्रिवृत अवले लिया गया 70 ग्राम्स, मुनक्का लिया था इसमें 10 से 15 मुनक्का, सोक्ड मुनक्का लिया था, और आरगवत फल मजा लिया था। इन तीनों को मिलाकर ये विरेचन योग पेशेंट को दिया गया था। उसके बाद शुद्धि के अकॉर्डिंग संसर्जन क्रम फॉलो किया गया। शमन चिकित्सा में इसमें स्वयंभू गुगुलू, आरोग्य वर्धनी बटी और पूतिकादि लेप। पूतिकादि लेप का कंटेंट्स उन्हें मेंशन किया था, इसमें पूतिक, अर्क, स्नूही, आरगवत जाति के ये पत्ते लेंगे और उसको गोमूत्र में मिलाकर उसका लेप लगाना है, उसका लेप बनाना है। तो इस स्टडी में काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ श्वेत्र विद आयुर्वेदिक मोडालिटीज, केस स्टडी। इसमें भी शोधन और शमन है। जैसे कि हमने पिछली स्टडी में देखा था कि प्रॉपर स्नेहपान फॉलो किया था, इस वाली स्टडी में शोधन में कोई भी स्नेहपान या विरेचन वैसे नहीं कराया गया है। एक नित्य विरेचन टाइप का इन लोगों ने कराया था, जिसमें कि एरन ब्रस्ट हरित की चूर्ण को ल्यूक वाटर के संग दिया गया 15 डेज के लिए। कोई स्नेहपान या विरेचन कर्म नहीं था, और सिर्फ नित्य विरेचन कराकर शमन औषधि दिया गया। अविपतिकर चूर्ण 100 ग्राम, गंधक रसायन 10 ग्राम्स, गिलोय सत्व 20 ग्राम, ताम्र भस्म, प्रवाल पिष्टी, इनका एक मिक्सचर दिया गया ट्वाइस अ डे। खदेड़ चूर्ण, गुड़ुची चूर्ण और नींबू चूर्ण का एक मिक्सचर दिया गया। टैबलेट्स में आरोग्य वर्धनी बटी, बाकुची ऑयल का लोकल एप्लीकेशन, मंजिष्ठादि क्वाथ और महातिक्तक घृत। यहाँ पे मैं बताना चाह रही थी कि जो महातिक्तक घृत पिछले स्टडी में जैसे महातिक्तक घृत से स्नेहपान कराया गया था प्रॉपरली 30 ml से लेकर 210 ml तक, यहाँ पर डेली बेसिस पे महातिक्तक घृत यूज किया गया 10 ml बीडी, रोज सुबह शाम 10-10 ml बीडी। तो
इसमें भी इफेक्ट बहुत अच्छा पाया गया। एक स्टडी है केस स्टडी मैनेजमेंट ऑफ श्वेत्र थ्रू आयुर्वेदा। इसमें प्रोटोकॉल दीपन पाचन, मृदु विरेचन, शमन और रसायन चिकित्सा। पहले दो स्टडीज में रसायन चिकित्सा नहीं इन्वॉल्व थी, लेकिन ये वाली स्टडी में रसायन चिकित्सा भी इन्वॉल्व थी। तो इंटरनल दीपन पाचन चित्रकादि वटी से दिया गया, मृदु विरेचन के लिए गंधर्व तैल यूज किया गया, और शमन चिकित्सा के लिए संजीवनी वटी, विडंगरिष्ठ, आरोग्यवर्धिनी वटी, टैबलेट पिगमेंटो, स्वयंभू गुगलू, बाकुची, खदिर और गुड़ची का चूर्ण, सारेवा घनवटी, महामंजिष्ठादि काढ़ा। एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए बाकुची चूर्ण और वाटर में मिला के उसको थोड़ी देर सनलाइट में रुकने के लिए बोला, और पिगमेंटो ऑइंटमेंट यूज किया। बाकुची चूर्ण का एक मेरा भी एक्सपीरियंस है। मैं ओपीडी में मैंने कुछ इसके श्वेत्र के पेशेंट्स देखे थे। तो पेशेंट बाकुची चूर्ण या वाटर में मिला के जब हम लगवाते हैं और सनलाइट में बिठाते हैं तो उसमें कुछ फफोले पड़ जाते हैं स्किन पर, जहाँ पैचेस पे हम लगवाते हैं तो वहाँ फफोले पड़ जाते हैं। तो मेरे पास पेशेंट्स आए थे कि उन लोगों ने ये ट्रीटमेंट बंद कर दिया था कि हमें तो बहुत रिएक्ट कर गया ये बाकुची चूर्ण और वाटर, और धूप में बैठने से फफोले पड़ गए, उल्टा हमें तो एडवर्स रिएक्शन हो गया इसका। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमें पेशेंट को उस समय हमें कंसर्न करवा देना चाहिए कि उसमें फफोले पड़ते हैं, और फफोले पड़ने के बाद हमें इसको स्टेराइल नीडल से प्रिक कर देना चाहिए, जिससे कि उसका जो वाटर होगा वो निकल जाएगा। ये लंबे समय तक करते करते मैंने खुद इसका एप्लीकेशन करके देखा है, और धीरे धीरे जो व्हाइटिश जो पैचेस थे वो पिंक में कन्वर्ट हो रहे थे। ओपीडी का ड्यूटीज इस तरह से रहती थी कि मैंने फुल फॉलो अप में कभी नहीं कर पाई। मैं रिग्रेट करती हूँ उस चीज के लिए, लेकिन हाँ मैंने चेंजेस देखे हैं। मैंने व्हाइटिश से पिंकिश होते हुए देखा है, स्किन कलर आते हुए देखा है, पैचेस को भरते हुए देखा है, लेकिन मेरा इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा कि मैंने फुली उसको कवर किया हो श्वेत्र के पेशेंट को। पर हाँ ये चीजें बहुत इफेक्टिव हैं। पिगमेंटो ऑइंटमेंट, रसायन ट्रीटमेंट, च्यवनप्राश में एक चीज बोलना चाहूंगी, जैसे आचार्य वाग्भट ने बोला है कि सर्वे रोगा अपि मंदे अग्नौ। ये जितना भी हमारा ट्रीटमेंट का बेसिस है, हम क्यों कर रहे हैं ये हम शोधन क्यों करा रहे हैं, हम इंटरनल ट्रीटमेंट किस बेसिस पे कर रहे हैं। जो भी रोग होता है वो मंदाग्नि से होता है, चाहे हम विरुद्धाहार लें, चाहे हम अजीर्णाशन लें, अध्यशन लें, कुछ भी करें, अति सेवन आहार का लें, विरुद्धाहार लें, अगर हमारी अग्नि ठीक नहीं है तो हमारी जो उत्तरोत्तर धातुएं हैं वो नहीं बनेंगी। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट किसी भी डिसीज को ठीक करने का, चाहे वो श्वेत्र हो, चाहे वो जीआईटी डिसऑर्डर्स हो, चाहे वो कोई भी रोग हो, कि हम पहले अग्नि को ठीक करें, उसका दीपन पाचन कराएं। दीपन पाचन एक छोटी सी प्रक्रिया लगती है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी पूरे ट्रीटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्रिया दीपन पाचन की होती है। जब तक हम अग्नि ठीक नहीं करेंगे, ना तो हमारी दवाई पचेगी, ना ही हमारा खाना पचेगा, और ना ही हमारी धातुएं ठीक बनेंगी। तो हमें उस पर बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान देना चाहिए। बस इन्हीं चीजों के साथ मैं अपना ज्ञान थोड़ा सा समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। हेलो, क्या आप पवन शर्मा जी? पवन शर्मा जी शायद नहीं है। अच्छा, आप कोई करो आगे। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर नेहा गर्ग जी। आप तो पहले भी हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ी हैं, आपका प्रेजेंटेशन रहा बहुत अच्छा रहा, और एक एमडी हैं काय चिकित्सा से, ये आपने प्रमाणित करने के पूरा प्रयास किया और प्रमाणित भी किया। वही एक फील्ड है जहाँ पर हम अच्छे से पेशेंट्स आते हैं और वहाँ चर्चा करते हैं, और पेशेंट्स पर मिलने वाले लाभ को प्रत्यक्षता न केवल देख पाते हैं, बल्कि अपने जो एमडी स्कॉलर्स हैं या अपने स्टूडेंट्स, उनको भी क्लिनिकल में दिखाने का लाभ देते हैं। आपने बहुत डिटेल से सारी बातें बताई, और ये भी शब्द प्रयोग किया कि जो हमारा क्षेत्र है वो, चाहे वो किलास के रूप में लें या हम लिकोडर्मा के रूप में लें, विटिलिगो के नाम से लें, सारी बातें हैं। पॉइंट ये था कि जब हम अपने आयुर्वेद से चर्चा कर रहे थे, आपने बहुत सारी बातें उठाई और बताया कि इस तरीके से हमने इसमें अपना काम किया है, अपना वर्क किया है, और कुछ हमारा एक्सपीरियंस नहीं भी है, हमारा अपना स्टडी नहीं है, हमने पढ़ा है, सुना है। आपने जो इसकी संप्राप्ति का जब विवरण किया, वहां पर दोष दूष और अधिष्ठान की चर्चा की थी,
तो विशेष आपने जो बताया कि विशेषण ऑफ त्रिदोषास भी इसमें माना गया है, आपकी बात बिल्कुल सही है। और वहां पर अपने दोषों में ये गिनाया कि धातु दोषों के अलावा भी धातु, मल, स्रोतस और अग्नि, इनका भी हमें विचारणा करनी होगी किसी भी रोग के बनने, और वही जाता है हमारे क्षेत्र या विटलों के मामले में। और वात पित्त की भी बात आपने रखी। धातुओं में आपने रस, रक्त, मांस और मेद, इन 4 धातुओं की चर्चा की, जबकि कुष्ठ में सप्त धातुओं का है समावेश माना गया है। ठीक है, अभी इसके बाद आपने निदान के मामले में आहारज, विहारज और मानसिक की चर्चा, जिसमें कि मिथ्याहार और मिथ्याहार में भी अतिसेवन अर्थात का बात किया। जो टोटल लिटरेरी एकेडमिक वर्क था वो 18 प्रकार के संयोग विरुद्ध आहार की चर्चा की ही है, और बहुत लंबी फील्ड है, वीर विरुद्ध, संपद विरुद्ध, क्रम विरुद्ध, परिहार विरुद्ध, उसमें कोष्ठ विरुद्ध, है ना, तो सारे ही है, वो तो आयुर्वेदज्ञ तो सब समझते ही जानते हैं। और आपने बहुत सारे मानसिक कारण और चिकित्सा वैषम्य की भी चर्चा की, बात बिल्कुल सही है। विशेष रूप से पंचकर्म के कॉम्प्लिकेशन के तौर पर ऐसा देखा गया है, अगर आपने श्लेष्मांतक वमन कराना है तो श्लेष्मांतक क्यों होना चाहिए, अगर पित्तांतक कराना है तो पित्तांतक तक बहुत ही केयरफुली सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अब पित्तांतक में जरा सा भी अगर लापरवाही हो गई या डिले हो गया और वो रक्तांतक कहीं आ गया, तो देखिए हम अच्छे काम करने चले थे और गड़बड़ हो गया। तो ऐसे ही चिकित्सा वैषम्य में ये चीजें आपने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया, और हम आयुर्वेदज्ञों को विशेष रूप से जो क्लिनिक से जुड़े हुए हैं वो बात को जरूर ध्यान दें। साथ साथ आपने बहुत सारे प्रयोग भी बताए, आयुर्वेदिक साइड से बताए, मैनेजमेंट बताया, खान पान बताया। एक चर्चा आपने वाकुची के लेके और भी चर्चाएं की, जिसमें कि आपने कुछ चूर्ण है वो उपयोग किए गए माना। एक आपने जो वाकुची तैल का स्थानीय प्रयोग की बात की, उसमें थोड़ा सा मेरा मत आपसे डिफर कर रहा है, मैं गलत हो सकता हूँ ये मैं पहले मान रहा हूँ, लेकिन जो मैंने प्रैक्टिस में देखा है वो आपके लिए एड ऑन हो जाएगा, क्योंकि आपने कहा कि मेरा यहाँ तक ही एक्सपीरियंस है, सबने देखा है। मेरे पास बहुत से केसेस है, मैंने अभी चूंकि मैं आज स्पीकर नहीं हूँ इसलिए मैंने उस चीज को नहीं डाला है, मेरे भी इसमें एल्बम में पढ़े हैं जिनके दोनों हाथ की फिगर है, सब है। तो एक आपने कलाओं की चर्चा नहीं की, अवभाषणी कला तक जाइए, जैसे हम कहते हैं षष्ठी पित्त था कला, गृहिणी सा प्रकृति था, तो अवभाषणी कला का भी इससे बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। और हमारा जो क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन एंड क्राइटेरिया ऑफ रिजेक्शन जब बात आती है, तो हमने ये हमेशा अपने पेशेंट को बतलाया है कि आप अगर हाथ है या वो स्थान जहाँ पर रोए होते हैं, आप रोए से एक क्राइटेरिया तय कर लिए, अगर जो रोया है वो अगर व्हाइटिश हो गया, व्हाइट हो गया है, तो हाथ जोड़ लीजिए, वहां पर हमारी आयुर्वेदिक दवाई चाहे हम कितने भी लंबे समय तक करें, वो हम उस स्किन के पैच के कलर को नहीं बदल पाएंगे। अगर पैच नीचे व्हाइट है, रोया वहां पर काला है, मतलब एज पर द एज, तो हमें सफलता मिलेगी। ये तो हुई एक चीज। दूसरी चीज आपने वाकुची या सोमराई तेल के स्थानीय प्रयोग के बारे में बताया, तो आपने कहा इसमें ब्लिस्टर बनता है, अगर हम उसको लगा के थोड़ी देर धूप बैठने के लिए कहते हैं, मतलब ये ख्याल है कि पोछने ना पाए, वो वहां पर लगा रहे, तो जो ब्लिस्टर बनता है तो पेशेंट अनअवेयर होते हैं, वो घबरा जाते हैं कि मेरा रोग बढ़ गया या क्या होगा, कैसे होगा। तो आपने वहां पर एक चीज दी कि अगर वो आपका आएगा तो आप कहेंगे उसको एक स्टेलाइट नीडल से तोड़ दीजिए जिससे उसका जल निकल जाए। उसका जो वैसे तो डिस्टिल्ड वाटर होता है ब्लिस्टर के अंदर, किसी बर्न के ब्लिस्टर में भी होता है, बॉडी का ही होता है, मतलब तो मैंने जो हमारा सेलुलोज है वही बाहर आएगा, हमारा साइटोप्लाज्म जो बाहर आएगा, तो ठीक हो गया। लेकिन मेरी यहाँ पे ओपिनियन आपसे थोड़ा डिफर है। हम लोग ये बताते हैं कि आप इस ब्लिस्टर को सावधानी पूर्वक, बहुत छोटा बच्चा तो अलग बात है, इसको बचाइए, इसको फूटने मत दीजिए, और ये अपने आप ही जैसे इसका जो ब्लिस्टर में के अंदर का जो जल है, जो पानी है, वो अपने आप ही स्किन में ही एब्जॉर्ब होगा। तो स्किन में एब्जॉर्ब होगा तैसे तैसे ही वो स्किन जो है वो नीचे बैठती जाएगी, एंड बाय दैट टाइम जितना स्किन टोन रहेगी उसमें ही कलरेशन आता है। और वो हम तो मिलीमीटर से नाप लेते हैं, भाई मेक ए टारगेट ऑफ 1 स्कार, गो फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। एक स्कार आपने 2 मिलीमीटर मैंने एक डायमीटर का ले लिया, कलर फोटोग्राफ ले लिया, आजकल तो मोबाइल से हो जाता है, फिर उसका आपने ब्लिस्टर देखा, एक पर ट्राई करिए, ब्लिस्टर बनेगा, पानी एब्जॉर्ब होने दीजिए, तो वो स्किन जब अपने आप से नीचे जाएगी तो वो उसके कहाँ पर ज्वाइनिंग है स्किन के और पैच की पता ही नहीं चलेगा, और धीरे धीरे इसकी शॉर्टनिंग होती जाएगी, एंड अ डे विल कम कि वो आपका इनविजिबल हो जाएगा। तो पानी ब्लिस्टर के अंदर ही रहने दीजिए, अगर सावधानी पे रखा जाता है, इट गिव्स अ वंडरफुल रिजल्ट। अलॉन्ग विद फॉर एड ऑन, अभी तक तो मेरे ख्याल से नहीं आया है, शायद हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सा में एक अपना आता है उद्यादित्य रस,
बहुत रेयरली है, मिलता नहीं, मुश्किल तो है। ये शायद एक ही ऊंजा कंपनी शायद बनाती है, झंडू बनाती है। ऊंजा मैंने अपने पेशेंट दिलवाया है, तो उदयादित्य रस की एक रत्ती की 125 मिलीग्राम की गोली जो है वो हम 2 से 3 बार तक दिलवाते हैं, और सन एक्सपोजर से बचाते रहते हैं पेशेंट जहां तक हो। और उसके साथ में ही हम अपनी कैशोर गुगुलू ये जो जरूर दिलवाते हैं, और जो रक्त शोधक के तौर पर काम करता है। इसी की कोई भी चीज दे सकते हैं, या निमालिया टैबलेट दे सकते हैं, नीम टैबलेट दे सकते हैं साथ में। चूंकि आप काय चिकित्सा से आपका पेशेंट है, बहुत ही आप में काम प्लेटफॉर्म सबसे जूनियर है, तो प्लीज यू कैन गो विद दिस क्लासिकल ट्रीटमेंट एंड सी द रियल्स, आपको और यश मिलेगा। और उसके साथ में सोमराई चूर्ण आपने 1 से 2 ग्राम खिलवाया, ठीक है। ऐसे ही सोमराई या बाकी चूर्ण का जो तेल का जो स्थानीय प्रयोग था हमने बताया। साथ में अगर आप पेटेंट पर जाते हैं तो हम 2 गोली 3 बार प्रिवेंटो टैबलेट भी दिलवाते हैं। प्रिवेंटो क्रीम जो लड़कियां या बच्चे हैं जो बाहर जाने में, तेल वेल लगाने में दिक्कत करते हैं, ब्लिस्टर प्रॉब्लम होती है, उनको फॉर एप्लीकेशन, बट उसमें थोड़ा आप स्टीमिंग करा दिए। फर्स्ट गो फॉर स्टीमिंग, मेक ए क्लियर surface of the skin and then apply the medicine. कोई सा भी केस अगर मेडिसिन एप्लीकेशन तभी अच्छी लगे, मतलब यूजफुल होगी, पेनिट्रेट करेगी मेडिसिन, जब आपकी स्किन जो है वो डर्ट से, लोकल इम्प्योरिटीज से क्लियर हो। तो गो फॉर स्टीमिंग, मेक ए क्लियर कॉन्सेप्ट ओवर द स्किन सरफेस एंड देन अप्लाई इवन pigmento tube or somrai tel. A few suggestions are here with me with my experience, and you will get the results. बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आप उदयादित्य रस को खोज लीजिए, कैशोर गुगुलू, निमालिया या नीम टैबलेट, और उसके साथ साथ अपना सोमराई तेल का एक प्रॉपर तरीके जो मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है और करके देखिए, यू विल गेट द बेटर रिजल्ट वट एवर यू आर हैविंग टिल डेट। सो थैंक यू वेरी मच। सर इतना ज्ञान देने के लिए, मेरे को करेक्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे वो प्रिकिंग वाला ही पता था, जैसे और भी पेपर्स में मैंने पढ़ा था। बट डेफिनेटली आप लोग तो हमारे छात्र होने का गौरव हासिल करते हैं, इससे बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है। आप कर रहे हो, हम लोग करके आपको अगर नहीं देंगे तो किसको देंगे? ये पिछले 30-32 साल बहुत अच्छे से हुआ है। आप जरूर करेंगे क्योंकि आपका पेशेंट भी, आप पे करने की क्षमता है, आप करिए। हम लोग MD PhD निकाल चुके हैं, कर रहे हैं, और आप सामने हैं तो अच्छा लगा कि आपसे हम शेयर करें। हम क्या करेंगे अपने पास रखे, जरूर 1-2 पेशेंट ट्राई करिए, एंड इफ इट हैपेंस अ बेटर वन, प्लीज डू इन्फॉर्म टू अस, टू अवर प्लेटफॉर्म। एंड बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब तो केस स्टडी और केस रिपोर्ट बनाने का समय है। मैं डेफिनेटली, अगर मेरे को ऐसा कोई पेशेंट मिलता है तो मैं खुद प्रेजेंट आउट ऑफ रिकॉर्ड ले लीजिए आप। ये नहीं किसी बच्चे का ट्रीटमेंट, मतलब आप किसी प्रोजेक्ट करवा रहे नहीं करा रहे, वो दैट्स एंटायरली डिफरेंट थिंग। आप देखिएगा विद इन ब्लिस्टर जो आपने अगर एक बार वहां पर जो वाटर में एब्जॉर्ब करवा दिया, आप देखिए कि इट विल शॉर्टन डाउन द टाइम। अच्छा, और क्या, जो चीज आप निकाल के बाहर कर रहे हैं, दैट इटसेल्फ ए मेडिसिन फॉर द पेशेंट एंड दैट टू फॉर द साइट ऑफ दैट ब्लिस्टर। आप देखिएगा उसको। डेफिनेटली सर, मैं जरूर ट्राई करूंगी सर। थैंक यू सो मच। Okay, thank you. So over to Pawan Sharma ji. Now I would like to request you all, sir, to join tomorrow at sharp 4:50, because time is 5 and tomorrow is hard day for Agnihotri, sir, because we would like to request all speakers to give 4 strategy for Ayush awareness. That means after the program, if 60 speakers will guide us, then 240 strategies will be with us, sir. That will be our achievement through this webinar, that we will have 240 ideas for Ayush awareness. So I will take 240 minutes to narrate and sum up all 240. Or 240 minutes for 1 minute for one strategy. It means really, as you told that this will be a hard time for me. So maybe no problem. This is first program, I hope, in India, where Vishwa Ayurved Parishad and All India Ayurved Congress both are on same platform, on same slide, sir. Dr. Rakesh Sharma ji, President, NCISM Board of Registration and Ethics, Vaid Tarachand Sharma, President, Rashtriya Ayurved Vidyapit, and Dr. Raghuram Bhatt will join us. He is also Secretary of NCISM at present, and really Prakand Vidwan of Sanskrit. Wherever he goes, he advocates Sanskrit. Then Gurudev, then BL God sir. So means I have tried to
request and invite all the dignitaries from all over the India and world, whatever we have done. So please join with others also. Minimum 2 persons extra each at 450 sharp. So we can show our strength. Zoom's strength is 100, and if that is full, God bless us to show the dignitaries that our 400 webinars have been able to unite minimum 100 persons at a time. Thank you, sir. Thank you very much. Now session is open. Thank you, Neha. Excellent. Thank you. Excellent. And now session is open, and moderator, sir, is Professor V.K. Agnihotri, sir. Well, thank you, Dr. Pawan Sharma ji. Thank you. Namaskar. As we all know that we have enlightened with our 4 guest speakers, right from Dr. Muhammad Abdul Waheed, who is a Padma Shri awardee, along with Dr. Ruchi Tiwari and Dr. Tejendra Singh and Dr. Neha Garg. I think Ruchi Tiwari is not joined today. She is traveling now, sir. That okay, is problem. I'm sorry, because she is in list, so we could hear only 3 guest speakers today. And what we find that our pleasure is this, that we got 1 information from Unani side and 2 information from Ayurvedic side. So to start with, I will request our Guruji Professor C.V. Jha sir कि वो अपने आशीर्वचन, अपनी शुभकामनाएं आज पर आए हुए जो प्रस्तुतिकरण हुई है उसमें कुछ संशोधन, सुधार और कुछ आगे योगदान करके आज के प्लेटफॉर्म को, आज की वेबिनार को सुशोभित करें. गुरुजी प्रोफेसर C.V. झा सर, नमस्कार सर. गुरुजी मौजूद हैं? अभी जब तक झा सर जी को हम दोबारा से इनवाइट करेंगे तो हम वैद्य राजन पटंगा जी से चाहेंगे कि वो अपने विचार दें, क्योंकि उनकी फील्ड अलग है. वो हमारी सूक्ष्म औषधि के राजा हैं, कर्ता धर्ता हैं और बहुत लंबे एक्सपीरियंस पे हैं. तो ऐसा क्षेत्र जो कि एक चैलेंजिंग क्षेत्र है, खासतौर से कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वैद्य राजन पटंगा जी अगर थोड़ा सा अपने व्यस्तता से कुछ मिनट्स निकाल के हमारे आज के इस वेबिनार के प्लेटफॉर्म पर. नहीं, मैं इतना व्यस्त भी नहीं हूँ और सूक्ष्म औषधि का राजा भी नहीं हूँ. नहीं हमारे लिए है. नहीं, गए 15 साल से कर रहा हूँ और उसका यूज भी कर रहा हूँ. तो ये मैंने पहले 2 स्पीकर का ये नहीं सुन पाया, पर नेहा जी का बहुत सारी बातें सुनी, तो उसमें उन्होंने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन किया कि रियली हेड्स ऑफ. तो उसके लिए जैसा उन्होंने की पित्त का ये किया, तो उसमें मैं मेरे पेशेंट्स को कि जैसा बाकुची तेल या बाकुची चूर्ण भी इंटरनली भी देता हूँ, और उसमें और मेरा जो सूक्ष्मीकरण में करता हूँ कि जो भल्ला तक का वो भी अच्छे रिजल्ट देता है. या लगाने के लिए मतलब अगर रुग्ण की प्रकृति कफ की है और इसको विटिलिगो है, तो उसके लिए जो गंधक द्रुति है उसका भी लोकल एप्लीकेशन पर वो तिल तेल में और मिला करके मतलब उसको डाइल्यूट करके लगाने के लिए देता हूँ. और साथ ही में जो प्रवाल भस्म है उसके भी रिजल्ट इसमें बहुत अच्छे मिलते हैं. तो बाकी जो मेडिसिन है, जैसा अभी अग्निहोत्री जी ने कहा कि कैशोर गुगुल भी, उसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, वो भी जरूर देखने को मिलते हैं. तो मैंने बहुत सारे कुछ पेशेंट्स देखे नहीं है विटिलिगो के, पर जितने भी देखे उनमें उनको पेशेंट को पहला काउंसलिंग करना भी बहुत जरूरी रहता है कि उसको ये बीमारी के बारे में सब समझाना और उसको कितना समय लगेगा ये ड्यूरेशन भी देना ज्यादा उचित रहेगा. क्योंकि हमारे पास पेशेंट जब आता है तभी बहुत सारे उसके दिमाग में सवाल भी रहते हैं और उसको एक ऐसा ये रहता है कि आयुर्वेद में काम बहुत डिलेड होता है और जो होता है वो अच्छा होता है और परमानेंट होता है. तो इसके लिए हर एक रोगी को हर एक जब भी हम लोग चिकित्सा करते कोई भी पेशेंट की, तो उसको टाइम ड्यूरेशन हमारे हिसाब से बताना कि ये इतना समय लगेगा. कि कफ का पेशेंट है या बाकी भी जो है
उसके लिए कितने दिन लगेंगे, एक अप्रोक्सीमेटली उसको बताना ये ज्यादा उचित रहता है, ऐसा एक मेरा मानना है। क्योंकि हमारे इसमें मैं जब भी चिकित्सा करता हूँ तभी अपना जो 3 चिकित्सा पद्धति है उसमें से सिर्फ दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न यही मैं करता हूँ। और ये करके जब भी हम लोग पेशेंट की प्रकृति भी उसको बताते हैं तभी वो थोड़ा अचंभित हो जाता है, और वो हिसाब से अगर हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे तो उसमें और भी सक्सेस आ जाता है। कि जैसे कि अपने इसमें कि दैव व्यापार चिकित्सा, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। उसको अलग अलग ध्यान धारणा करने के लिए बोलना या कुछ मंत्रों का चैंटिंग, तो वो भी मैं पेशेंट को सजेस्ट करता हूँ, और ये सब मिला करके इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सो थैंक यू नेहा जी, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। थैंक यू। मैं अब एक वो अग्निहोत्री सर का आदेश लेके विष्णु प्रसाद शर्मा जी को बुलाना चाहता हूँ। मैं HOD रहे हैं काय चिकित्सा। बहुत बढ़िया बात की मैं खुद ये कहने वाला था कि हमारे प्रोफेसर विष्णु प्रसाद शर्मा जी आज देर तक जुड़े हुए हैं, हमें इनकी उपस्थिति का लाभ लेना है, हरारत लेना है। और आप इतने मरीजों को देखते हैं, आपका काय चिकित्सा से सीधा संबंध है, प्लीज आप अपने ज्ञान से हम लोग लाभान्वित कराइए प्लीज। नमस्कार। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। आज तो सभी वक्ता लोग अच्छा तरफ से एक्सप्लेन किए हैं विटिलिगो का ऊपर। यूनानी से प्रोफेसर M.A. वाहिद ने काफी साल से काम कर रहे हैं, वो एक्सप्लेन बढ़िया से कर दिया है। और फिर लास्ट में जो नेहा गर्ग, बाकी लोग सब लोग ही अच्छा से प्रेजेंट किए हैं। डॉक्टर नेहा गर्ग ने जो उसको क्लिनिकल ट्रायल जो रिसर्च किए हैं, अच्छा तरफ से वो प्रेजेंटेशन किए हैं, अच्छा है। लेकिन टिल नाउ हम लोग नहीं बोल सकते हो इस मेडिसिन से 100% क्योर हो जाए, बिकॉज स्ट्रेस लेवल goes high in such type of diseases. Vitiligo is not a disease, but due to the social stigma, it creates more problem. Sometimes people goes to do suicide also. But anyhow, Ayurveda have very good treatment if the people come in the early stage. Bakushi, yes, it is a very wonderful drug. Along with internal medicine, whatever we have, we have to give liver medicine also. We have to give anti-helmintic medicine also if required. So only Ayurveda shows very good result. And we use sometimes common also in my practice. And recently I came to know that is callful. जो कला होने से पहले जो रेडिश कलर का हम लोग कॉलफुल बोलते हैं, हिंदी पर मुसवा या कोई बोलते हैं, उसका जो पेस्ट निकालते हैं काटने से. So somebody told me, please do research on that. It also gives good result. So next time I'm planning to do, because it is a herbal, there will be no any side effect. We can apply. Result will comes later on. Let's see. So anyhow, I offer sincere thanks to Pavanji, Agnihotriji, and all the members who organized very important seminar for today, Vitiligo, Care and Cure by Ayush. It's the most important subject, and it is required not only in India, all over the world. People are waiting for specific medicine, and it is now our duty. We have to bring out new medicine and which is more effective, no doubt. This Bakushi and all this medicine shows good result, but more any new medicine, scientific medicine, if we can bring, it will be helpful for us. Thank you. Namaskar to all. Thank you, Professor VP Sharma sir, for your all. कुछ बोलना चाहती हैं सर लगता है. जी मैं बुला रहा हूँ, please sir. So for his your comments along with your query. So definitely it will go a long way when you take this responsibility to go further with the vitiligo cases. I am also seeing in chat box a few questions. The one question is from Nongai Dano Tong, who put that should application of Bakuchi churn plus water to continue after formation of blister. For that the answer is
that well, the formation of blister will be at one place or two, or you can proceed with the targeted application of Wakuchi tel step by step, or patch by patch, instead of all patches, all spot at the same time. So for the rest of the treatment, the use of oral use of Wakuchi churn along with the water may be continued. And if any expert would like to answer to this question, they are invited. But at the same time, since Dr. Professor Kamini Dhimani is very much with us, and she also put one query that any relation with the degenerative changes. So I would like to invite him that she please come and put your question along with your suggestions. Thank you so much, Professor Kamini Dhimani. Sir, I have a question to ask to Vishnu Sharma, sir. Is there any relation with degenerative changes? I wanted to know, sir. As I have seen in females, after I think 50, 55, 60 years of age, after menopause, when they are coming to us, they are having such type of vitiligo patches on hands and feet sometimes. So I wanted to know, have you seen any such type of relation in this disease? Ma'am, I think a few hours back, like 30 or 32 hours back, you were in BHU. I have a case, sir. I have a case. And now you are here. Yeah, please. Respected Birju Maharaj, sir. जो कथक नृत्य थे अपने, उनको 55 की एज के बाद हुआ, और ऐसे केस मैंने कम से कम 20 से 25 पुरुषों में भी देखे. तो ये हो सकता है, कामिनी जी का बिल्कुल सही कहना हो सकता है कि डीजेनरेशन के साथ इसका कुछ ना कुछ लिंक है. विष्णु प्रसाद शर्मा जी. हाँ, ये तो बोलने में दिक्कत है, रिलेशन है कि नहीं, because we don't know the exact cause why this disease is occur. It may occur at any age, but during the menopause time or after menopause, it's occur, but it is not occur in all the people, and percentage is also not so high. But from my side, maybe there may be some relation, but scientifically, yes, we don't have any proof regarding these things, any relation is there or not, but it may occur at any age group. So Exact cause is not known. Yes, Sir, sir, actually, like aging spots, we seen in females that some females are having black aging spots in fingers and hands and on skin, black spots. Some are having this type of white spots. So I'm asking that any relation with this type of spots in aging. That was my query. Black spot aging, due to the aging problem, yes. No, Skin no, problem sir. may occur. No, sir, not itching, but after some age, females are having like spots. Specifically, I have seen on hands and feet. Also, that's I have no knowledge about these things. But from my side, this relation is not there. Ma'am Kamini, I think things are not studied scientifically in this direction, because it may be a very small module, so it can be inferred, it can be noticed, and make a group of it, that how many type of ladies running with this age group or after menopause. There are so many changes, no doubt. Even some spots on face is appearing after a certain age, on even legs and below the knee. There are so many spots are coming. This is again the circulating pigments getting deposited at one place or depleting from one place. So it ultimately affects in a form of the different type of the newer spots. On our Professor K.N. Rupa sir, on his head, there was a big reddish color spot known as Tilkalik, as Professor Jyotir Mitra ji designed that spot as a Tilkalik spot on Professor Udupa's head. So these were things. So these are the sectors where the intelligent person with open eyes can take the notice of it and can make a group or a small module to study in a scientific manner. Thank you. Hello.
Yeah, Dr. Ryan Patankar ji is also adding something, I think. He's adding it. हाँ, Yes, यस ऐड, मतलब कामिनी जी का जो क्वेश्चन था या उनका जो थॉट थे वो एकदम ही सही थे, क्योंकि मेरे ख्याल से मेनोपॉज जब भी आता है या मेनोपॉज के बाद में कि जो फीमेल्स के इसमें जो नेचुरल प्रोसेस है कि रक्त और पित्त दोनों जो शरीर से बाहर निकल जाना, वो शरीर में कहीं ना कहीं रहने की वजह से भी ये हो सकता है। बट जैसा विष्णु प्रसाद जी ने कहा कि वो एक टाइप ऑफ स्टडी हो सकता है कि उसके लिए तो ये भी करना जरूरी है। तो ऐसा एक मेरा मानना है, क्योंकि वो भी एक लिंक हो सकती है कि आफ्टर मेनोपॉज, क्योंकि मैंने भी ऐसे सिर्फ एक ही पेशेंट देखा है, पर दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन। थैंक यू। Thank you, Ranji. Today I am having Dr. D.K. Shrivastava, Dhananjay Kumar Shrivastava from Rishikesh. And what I am thinking that he has got a lot of patients of foreign countries, or he has also visited so many countries. He is having patients from other countries also there in Rishikesh. So if Dr. Dhananjay Shrivastava is here and will like to add on something on today's International Vitiligo Day, I would like to have some ideas from him. Dr. D.K. Shrivastava, you are invited to come with your suggestion and queries. Dr. Dhananjay Shrivastava, namaskar. Dr. Shrivastava, you are listening with Dr. D.K. Shrivastava? Dr. D.K. Shrivastava, you are here? Hello? Well, as if he takes time, again, I would like to go to whether Jayesh Thakkarji, because it's very rare to have his ideas off and on. So today is a very vital subject, and 1 out of 10 or 1 out of 20 patients may be having this type of problem. Those who are visiting his clinic also, the Jaya clinic. So Dr. Jayesh Thakkarji, Jayesh Thakkarji, if you are here, you please come with your suggestions or any query if you are having in your mind, to have this platform is open for you to come with your suggestions. Whether Jayesh Thakkarji, do you listening me? Well, as long he is going to join us, I'm seeing that a new face as Dr. Nongay Dano Tong is here. I would like to know that from where he is joining, from Assam or from out of country, and have he got any idea to add on to this platform? Dr. Tongji, namaskar. Our well-established batsman like Dr. C.P. Sharma is with us. Dr. C.P. Sharma, sir, we cannot stop us to have your experiences as even joint director and also having the experience from Rajasthan and Madhya Pradesh both. So please join and enlighten us to this platform on our International Vitiligo Day. You might have treated some cases, or you might have some idea as a treatment in your mind. So what may be the care and cure as per your statement? Please join us. Namaskar, Dr. C.P. Sharma, sir. Sir, namaskar, sir, namaskar. सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये हमारा 12th विटिलिगो डे अब विश्व सूत्र दिवस 12वां मना रहे हैं। इसका इतिहास तो मालूम होगा, बाकी पेशेंट की वो भी मालूम होगी। इस समय नियर अबाउट 2% पूरी हमारी आबादी के इस तरह के पेशेंट का सर्वे हुआ है। यह फर्स्ट टाइम जब नाइजीरिया 2011 में नाइजीरिया के लोगों ने एक कोई माइकल जैक्सन के कार्यक्रम जो पॉप सिंगर थे, उनके कार्यक्रम के उद्घाटन के समय इसकी घोषणा हुई थी, क्योंकि उनको ये व्याधि थी कि वो इससे माइकल जैक्सन इस रोग से पीड़ित थे। जी। जहां तक आपका
प्रश्न है मेरे द्वारा ट्रीटेड या मेरा इस मामले में क्या अनुभव रहा है। जितनी चिकित्सकीय सेवा मैं दे पाता हूं उसमें मेरे पास निश्चित ही केस तो आते हैं, परंतु मेरा जो एक अनुभव, चूंकि मैं ग्रामीण अंचल से जुड़ा हूं, तो 4 चीजों का मैंने विशेष अनुभव किया है, जिसमें कठगूलर, उदुम्बर होता है, उदुम्बर एक, उदुम्बर 2 तरह का है उदुम्बर, उसमें एक कठगूलर होता है। कठगूलर, खदीर सार, आंवला, खदीर सार, आंवला, कठगूलर और बाकुची, इसके साथ तुबरक तेल, तुबरक तेल, ये जो चिकित्सकीय एकल औषधीय व्यवस्था में कुछ हमारे प्रयोग रहे। साथ ही आरोग्यवर्धनी, महामंजिष्टादि काढ़ा, रस माणिक्य बड़ा सावधानी पूर्वक उपयोग किया जा सकता है, रस माणिक्य का गंधक रसायन। साथ ही हमारे यहाँ जो टेक्सुअल रेफरेंस है, जैसे शशि लेखा बटी, कनक बिंदुआरिष्ट, कनक बिंदुआरिष्ट, शशि लेखा बटी, इनके भी रेफरेंसेस गुग्गुल के रूप में एक स्वयंभू गुग्गुल त्वग विकारों में वर्णित है, उसको सूत्र में विशेष रूप से, क्योंकि यहाँ पर इस रोग में हमारी जहाँ दो दूष्य है, वो 3 है, रक्त, मांस और मेद, दोष त्रिदोष है। इसको त्रिदोषज रोगों में परिगणित किया है आचार्यों ने। और बहुत ज्यादा पुराना नहीं हो तो हम संशोधन के बाद संसमनीय बाह्य लेप के माध्यम से कुछ अच्छे परिणाम पा सकते हैं। इन लेपों में जो विशेष रूप से कुछ जैसे खदीर, करंज, खदीर सार, एक जगह अस्वस्थ पीपल के वृक्ष की त्वचा का भी उल्लेख है। पीपल अस्वस्थ त्वक का क्वाथ प्रयोग करने का विधान है। तो ये हमारे पास जो कठगूलर, बाकुची और बहेड़ा और हरड़, इनके एक प्रयोग हमने गुड़ के साथ टैबलेट बना के कुछ पेशेंट्स में किया, उसके कुछ अच्छे रिजल्ट आए। साथ में मंजिष्टादि क्वाथ, मंजिष्टादि के जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, प्रयास ये किया कि वो पेशेंट खुद ही बनाए। और बाकुची चूर्ण जो सर्वविदित है त्वग विकारों में और इस रोग में विशेष रूप से बाकुची का, तो यदि हम लोग एक ऐसा कोई नया चाहते हैं, जैसे योग तो बहुत वर्णित है हमारे यहाँ, सूत्रहर वर्ती भी एक एक्सप्लेन्ड है, संसन चूर्ण भी है। ये जो सूत्रहर वर्ती है उसमें हरताल, करवीर, चित्रक और वाकुची, इन सबको लेकर के अर्क, क्षीर और गौमूत्र की भावना, साथ ही गौमूत्र द्वारा प्रक्षालन का प्रावधान है, उससे भी अच्छे रिजल्ट पाए जा सकते हैं। सूक्ष्म त्रिफला, त्रिफला में त्रिफला की भावना देना, सूक्ष्म त्रिफला का कोष्ठ शुद्धि के लिए अपन उपयोग कर सकते हैं। ये छोटे छोटे, साथ में निम्ब पंचक, जो हम काढ़ा बनाए उस काढ़े में निम्ब पंचक, नीम की 5 चीजें, वैसे मार्केट में इसके नाम से टैबलेट भी आ जा रही है, परंतु नीम का पूरा पंचांग, जिसमें उसकी बीज, फल भी हो, पुष्प भी हो, पत्ती भी हो और त्वक भी हो। स्पेशली त्वक का जो वर्णन मिल रहा है वहां वो कह रहा है कि मूल त्वक, उसकी मूल की त्वचा का प्रयोग करने का प्रावधान है। इसमें गंधक, शुद्ध गंधक का प्रयोग, बाह्य प्रयोग जहां अपन करना चाहें। तो ये छोटा सा जो अनुभव मेरे को मिला, उसमें मैं तो चाहूंगा कि गौमूत्र
गौमूत्र प्लस बाकुची, कटगुलर और बाकुची की टैबलेट बना सकते हैं अपन। कोष शुद्धि के लिए आरोग्यवर्धिनी, पंचनिम्बादी बटी भी आती है। ये सब औषधियां अपन प्रयोग कर जो शास्त्रोक्त व्यवस्था है उस व्यवस्था में औषध के साथ साथ पथ्यापथ्य और आहार विहार का वो एक्सप्लेन करते हुए, साथ ही जो एक सामाजिक वो आती है उसमें हमारे यहाँ एक जगह तो इतना कह दिया कि जो अपनी मेहंदी होती है, मेहंदी में ये कॉफी, मेहंदी, कॉफी और त्रिफला के हिम में इसका एक लेप बना के आप लगा सकते हो। इसमें मेहंदी, त्रिफला का हिम और कॉफी मिला दो, क्योंकि उसको कुछ अपन को, और साथ में उन्होंने क्या कहा कि इसका जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोहे की कढ़ाई में करें तो वो और कुछ गहरा रंग ले लेगा और वो आपको 6-7 दिन के लिए कुछ वो देगा, त्वचा का जो वर्ण है उसमें व्यवस्था देगा। आभ्यंतर प्रयोग करते रहे, उसमें बाकुची का लंबे समय तक यदि प्रयोग किया जाए, और कर्ण को खदरा रिस्ट भी ले सकते हैं अपन, खदरा रिस्ट का, तो ये एक अच्छे रिजल्ट हम पा सकते हैं। साथ ही जो हमारी सैद्धांतिक, सामान्य और विशेष चिकित्सा सिद्धांत हैं, इतने महीने बाद हमें वमन कराना है, विरेचन कराना है, पित्त में सर्पी पित्त, ऐसे जो उसका सैद्धांतिक चिकित्सा सिद्धांत था, विशेष कुष्ठ का, उस चिकित्सा सिद्धांत का भी पालन यदि अपन करेंगे, निश्चित अच्छे परिणाम पाने की संभावना रहती है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा हमने सूक्ष्म, अपना सूक्ष्म अनुभव दिया, ये सूक्ष्म नहीं, ये तो बहुत विस्तृत अनुभव हो गया। और एक चीज जी सर, कटगुलर और ये जो खदीर वगैरह बताया, तो इन सबको किस रूप में, माने कितना प्योरीफाइड हो, इसको आभ्यंतर प्रयोग? इसका ये आभ्यंतर प्रयोग है सर। कटगुलर का फल लेना है, फल लेना है, तो फल को गूलर का फल सुखा के सुखा ले, बहेड़ा की छाल लेना है अपन को, इसकी मिली हटा देना है। साथ में इवन यहाँ तक कहा कि उन्होंने गिलोय भी मिला लो आप, तो नीम की पंचांग भी मिला दो और इस सब का एक चूर्णित कर लीजिए। चूर्णित करने के बाद त्रिफला की भावना दे दीजिए, नहीं तो आचार्य जो कह रहे हैं, जो हमें रेफरेंस मिला है, उसमें गुड़ में टैबलेट बना लो, गुड़ में मिश्रित करके। जैसे हम कृमि रोगों में पलाश बीज देते हैं तो उसको गुड़ के साथ उसके बटक छोटी छोटी टैबलेट बना ले, तो वो थोड़ा साइज बड़ा हो जाएगा। भले फिर उसके छोटे छोटे टैबलेट जो हमारी साइज टैबलेट का रहता है उसकी थोड़ी मात्रा चूंकि बढ़ाना है, एक्सट्रैक्ट ले नहीं रहे हम तो एज ए होल फ्रूट ही ले रहे हैं, तो हमारी टैबलेट का साइज निश्चित बड़ा होगा। उसकी मात्रा हमें 2 TDS करना पड़ेगी। जो हमारा मोदक होता है एक तरह से, जैसे सिवा गुग्गुल है ना, इस तरह की टैबलेट बनती है, तो उस टैबलेट के अपन 2 टुकड़े कर सकते हैं। गुड़ ले लेंगे उसमें। एक आपने प्रिपरेशन बताई जिसमें आपने बताया जो कढ़ाई बनाएंगे, जिसमें कि मेहंदी, कॉफी, त्रिफला, ये सब बताया आपने। ये तो हाँ, ये तो हमने सब केश रंजन जी नहीं, ये तो ऑलमोस्ट कलरिंग के लिए हो गया ना, ये जो पेस्ट बनेगा। हाँ, तो केश रंजन के लिए कर रहे हैं। इसमें जो कॉस्मेटिक कॉन्सेप्ट है ना, उसको इम्प्रूव करेगा। जो सोशल स्टिग्मा है उसके लिए आपका 5-7 दिन रहेगा, जस्ट लाइक हेयर कलरिंग हो गया, ऐसे स्किल के अंदर कलरिंग हो जाएगा। मेहंदी लगाना, तो इसमें सर आरगवत गूदा भी ले सकते हैं। आरगवत का गूदा, उसको थोड़ा स्नेहित करने के लिए आरगवत गूदा, आरगवत की आरगवत फली का गूदा, कच्ची फली ले, उसको काट के चीर के उसका गूदा लेके रख ले, उसको पेस्ट बना ले। पेस्ट बना के फिर उसको गुड़ मिला के उसकी टैबलेट बन जाएगी, तो लेप बन जाएगा। उसको, उस लेप को भी आप कम से कम 7 दिन रख सकते हैं। 7 दिन बाद उसमें फंगस डेवलप होने लगता है, या तो उसको प्रिजर्वेटिव के साथ रखे तो लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हैं।
चलिए सर, विदिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना ज्यादा ज्ञानवर्धन कराया, आपने इतना एनलाइटन किया, आपके इनपुट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत ही विस्तृत अनुभव भी है और तैयारी भी थैंक यू आपकी सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। अब हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास अगर वैद्य जयेश ठक्कर जी एक बार पुनः अगर हम सुन पा रहे हैं अपने संदेश देने के लिए, कुछ मैसेज देने के लिए, तो आइए, आपका स्वागत है। और साथ साथ हम बुला पाएंगे डॉक्टर स्मिता जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर स्मिता, आप अपना कुछ सजेशन देना चाहेंगे तो आप बताइए, आप इसमें कहाँ से जुड़ रहे हैं और आपको आज के विटिलिगो डे के बारे में, विटिलिगो के से जुड़ा हुआ कोई आपका अनुभव है या कोई क्वेरी है तो उसके लिए आपको इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर धनंजय श्रीवास्तव, आप लाइन पे बने हुए हैं, अगर आप कुछ सजेशन देना चाहें तो आपको इनवाइट करते हैं। आज एक अतिथि नए देख रहे हैं सर, डॉक्टर नामगे दानोत्वांग जी। यदि नवांग सर, यदि मैं गलत नहीं हूँ। नहीं, नवांग जी को हम बुला रहे हैं, वो अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किए, मतलब वो आए नहीं। डॉक्टर तीसरी बार ज्वाइन किए हैं वो। आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर नामगे दानोत्वांग, प्लीज तवांग साहेब, if we are audible to you, please unmute yourself. Hello, good evening, everyone. Good evening, doctor. Good evening. Good evening. So, myself, Dr. Namge Ayurveda from Arunachal Pradesh. Welcome on Ayush Jyoti platform. Welcome. Thank you, sir. I got website से हमको ये साइट लाइक हम कर लो तो इस ज्वाइन करके मुझे बहुत सा अच्छी ज्ञान मिला है, कुछ इसमें भूल भी किया था और कुछ बहुत चीज सीखने के लिए भी मिला है सर आप लोग से। और इस फ्यूचर में और मुझे बहुत खुशी है कि आप जुड़े। आप नॉर्थ ईस्ट से लोगों को जोड़िए, क्योंकि वहां तक कहीं ना कहीं CMEs भी कम होती हैं, वहाँ डॉक्टर कॉन्फ्रेंस भी कम होती हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस आप लोगों की है। इट इज फॉर यू, ऑफ यू, बाय यू, एवरीथिंग फॉर यू। सो प्लीज promote this to North East and doctors will join along with you. Please. अग्निहोत्री सर। Yes sir, thank you. इस बीच हम आज के अपने गेस्ट स्पीकर्स जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे हम फीडबैक लेना चाहें। उससे पहले डॉक्टर धनंजय श्रीवास्तव को एक बार हम पुनः आमंत्रित करते हैं, अभी वो शायद जुड़े भी थे। डॉक्टर धनंजय श्रीवास्तव, आज हम लोग इंटरनेशनल विटिलिगो डे मना रहे हैं और बहुत सारे थॉट हम लोग के पास आए, हमारे गेस्ट स्पीकर्स अपने बातें रखी। आपका फॉरेन पेशेंट्स के साथ में अच्छा अनुभव है, आपका यूरोपियन कंट्रीज में जाने का और वहां पर तरह तरह के और पेशेंट से कांटेक्ट हुआ है। आप अपना कुछ विचार देना चाहेंगे? डॉक्टर DK श्रीवास्तव, नमस्कार। डॉक्टर धनंजय श्रीवास्तव फ्रॉम ऋषिकेश, if you are online, you please come with your some suggestions and your experiences. Yes, Dr. Dhananjay Srivastava. सर प्रणाम। गुड प्रसन्न, इवनिंग। गुड इवनिंग, आइए। अभी पूरा डिटेल सर मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया ओपीडी के चक्कर में। कोई बात नहीं, अपना अनुभव बताइए। बस बहुत अच्छी बात है, दीपन पाचन की बात है और एक नर्वस सिस्टम का भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। स्किन डिजीज की कोई भी अगर एटियोलॉजिकल फैक्टर को सर्च आउट किया जाए, वैसे तो 50% से ज्यादा कोई एटियोलॉजिकल फैक्टर नोन नहीं है। अगर मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आप बात करें, अपने आयुर्वेद में आहार विहार की और जो भी विसंगतियां हैं उसके आधार पे तो हम बच सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि तनाव रहित जीवन जो है आपको स्वस्थमय दिनचर्या और आपको निरोगी काया दे सकती है, जिसमें स्किन भी है। तो अच्छा लगा और लोगों को सुनने के लिए आज टाइम नहीं मिल पाया सर, तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और ये तो ठीक आपने बताया, आप अपने अनुभव बताइए जो आपके अगर कांटेक्ट में आपके फॉरेनर पेशेंट या आपके फॉरेन विजिट में अगर आपको ऐसे पेशेंट्स मिले हैं या कोई अनुभव हुआ जिनको आपने खान पान में कोई डायरेक्शन दिए हो, रेस्ट्रिक्शन बतलाए हो, क्योंकि वहां तो अक्सर पिगमेंट्स की प्रॉब्लम रहती है, वो तो बहुत ही हाइपर पिगमेंटेड रहते हैं,
तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप यूरोपियन विजिट में या पेशेंट्स कमिंग टू यू, फॉरेनर पेशेंट कमिंग टू यू इन इंडिया? नहीं, उनको जब मैं वेजिटेरियन डाइट पे लाया हूँ नॉन वेज से, तो उनके स्किन में काफी कुछ फर्क मिला है। That's what I'm interested to have from you. That's what I'm interested to have this knowledge from you. Vegetarian diet. You make more emphasis on vegetarian diet for those patients. Yeah, please continue. और इनटेक ऑफ वाटर, और जो आपके फ्रूट जूस होते हैं वो लोग जूस ज्यादा लेते हैं, लेकिन हमने ये देखा कि जो उनके एप्पल सूज, जो भी उनके जो विनेगर वगैरह टाइप के बना के लेते हैं, इस सब को छुड़वाया मैंने, जो कि आर्टिफिशियल सिंथेसिस से बनते हैं या प्रिजर्वेटिव डाल के बनते हैं। उनके जो फूड बनते हैं जिसमें कि आपके प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जो इसमें आपके जितने भी ये मैदा वाले प्रिपरेशन होते हैं, तो उनको इस स्किन डिजीज में तो काफी आराम मिला सर। और अपने प्रिपरेशन में आमलकी रसायन का, सत्वगिलोय का, बाकुची का, हरिद्रा खंड का, गंधक रसायन का, इसका हमने काफी अच्छा रोल प्ले किया है स्किन डिजीज में, विटिलिगो में भी। और बताइए, कुछ कहना, कोई क्वेरी आपको करनी है? नहीं सर, कुछ अभी Thank you, Dr. D.K. Srivastava. Dr. D.K. Srivastava joined, and the reality is this, that we have got a certain different sector involvement. That foreigners, those either they are having a hypopigmented skin or having non-vegetarian diet, along with the heavy consumption of fruit juices containing the preservatives and maybe chemicals. So for those, the message is that if they want to keep themselves away from such type of skin diseases, especially like vitiligo, they have to say namaste to all these preparations, and then the result will be better. So with this experience, Dr. D.K. Srivastava informed to this platform that, well, that sector is very much, and it is untouched by our general Indian doctors. So thank you, Dr. Tejendra Singh, very much. Now, Dr. Pawan ji, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, डॉक्टर सर मैं बोलना चाहूंगा सर। अच्छा, अग्निहोत्री साहब, सीपी जी, एक हमारे पंडित जी हैं, उनका एक अनुभव भी मैंने अपनी चिकित्सा में जोड़ा है। वो सूर्य उपासना बताते हैं और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। वाह 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 वाह। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ, सूर्य उपासना, मतलब आप निश्चित सूर्य को, भगवान को वो दें, पानी दें। तो इसका पर्पज यही है कि सुबह जल्दी उठोगे, नहाओगे, धोओगे, तो अर्ली आवर्स में आप सूर्य के सामने जाओगे, तो कुछ सूर्य की रश्मियां जो हमारे डर्मा के केसेस में बहुत अच्छी रहती हैं, स्किन डिसऑर्डर्स में, तो वो इस तरह से अपन इनडायरेक्ट वे में वो हमारे लिए सहयोगी और हेल्पफुल हो सकती है। और फिर आदित्य जब हमें हमारी अग्नि को, हमारी जाठरा अग्नि को, हमारी अग्नि वाले जितने भी वो है सेगमेंट बॉडी में, उन सबको पूरी तरह से पावरफुल बना देंगे, तो हम जो खाएंगे, जो दवाई लेंगे, जो आहार लेंगे, वो बढ़िया बनेगा। हमारी त्वचा भी अच्छी बनेगी, रस धातु भी अच्छी बनेगी। डॉक्टर सीपी शर्मा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उस वाले सेक्टर को टच कर दिया जिस सेक्टर को हम 30 तारीख को, 30 जून को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल दैट रेफरेंसेस की चर्चा गहराई से करेंगे। अगर आप इसको शुरू करते हैं तो देखिए, हमारे ज्योतिषाचार्य लोग इतना बतलाते हैं कि 11 या 21 आहुतियां अपनी केवल ये अमृता की लकड़ी से या बबूल की लकड़ी से, ये देसी घी की सूर्योदय के समय अगर आप देते हैं तो केवल विटिलिगो नहीं, उन्होंने तो सोरियोसिस पर गारंटी के साथ भी कहते हैं उससे फायदा होता है। आदित्य के लिए सूर्य नमस्कार की चर्चा कर लीजिए और आदित्य हृदय पढ़ लीजिए, और ये 11-21 मतलब जो संविधा होगी वो इकलौती एक ही, ऐसे नवग्रह संविधा नहीं, केवल एक संविधा बताते हैं, तो उससे करते हैं। तो ये सब चीजें तो 30 तारीख को चर्चा करेंगे। लेकिन अच्छी बात है, अगर हम रोग के निदान को और रोग के उपचार को, जो व्यक्ति जिस मतलब धर्मावलंबी है, जिस क्षेत्र से, जिस विश्वास और श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, उसके प्रमोशन का भी कुछ उसको मार्गदर्शन कर देते हैं, तो वो सोने में सुहागा होगा, उसमें कार्य में और अधिक गति मिलेगी और जल्दी काम होगा। तो आपके इस एड ऑन करने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पंडित जी का भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से धन्यवाद कि ऐसे सब कलेक्शन आप उनसे और ले लीजिए, और 30 तारीख को फिर हम लोग अच्छी वाली बल्लेबाजी करेंगे, इस ज्ञान बढ़ाने
जी सर, थैंक यू सो मच सर। अब हम चाहेंगे कि हमारे जो आज के गेस्ट स्पीकर्स रहे हैं उसमें मौजूदा समय में शायद सभी लोग विदा कर ले गए हैं। जी डॉक्टर तेजेंद्र सिंह, डॉक्टर तेजेंद्र इकबाल जी हियर, अगर आप कुछ और जोड़ना चाहें। डॉक्टर तेजेंद्र जी, आपने सभी की बातें सुनी, सभी के लेक्चर सुने हैं, आपको अपने एड्रेस में कुछ बढ़ाना चाहें या कुछ और क्वेरी है, कुछ है तो बताइए। डॉक्टर तेजेंद्र जी आप जुड़ रहे हैं? डॉक्टर वैद्य अर्जुन पटेंकर जी कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर। हाँ, एक ही मिनट कि ऐसा है कि मेरे पिताजी और मैं और मेरे दादाजी भी, हम लोग ऐसा कहते थे कि यहाँ पे कोई भी कास्ट वगैरह ये बाजू में रख करके, अभी जो एक ये हुआ था डिस्कशन, तो उसमें कि जो मुस्लिम पेशेंट्स है उनको हम लोग बोलते हैं कि अपने अल्लाह का नाम लेकर के अगर दवा शुरू करेंगे तो उसके जो बेनिफिट्स है वो और भी अच्छे मिलते हैं। या हमारे इसमें जो भी भगवान को मानते हैं उनका नाम लेकर के अगर दवा शुरू करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा काम करता है। और विटिलिगो में स्पेशली जैसा श्रीवास्तव जी ने कहा कि आहार मतलब दिनचर्या ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही, तो बस इतना ही ऐड करना था। थैंक यू। ठीक है। तो मैं समझता हूँ आज के प्रथम चक्र में हमने लगभग सभी अपने अतीत वक्ताओं के और अपने आज के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए सभी पैनलिस्ट से अच्छी चर्चाएं कर ली और उनका ज्ञान प्राप्त किया है। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास हमारे बहुत ही वरिष्ठ डॉक्टर जगदीश डोमा जी जुड़े हुए हैं हम लोगों से आज के प्लेटफॉर्म पर। हम बहुत ही आदर के साथ में उनके विचारों को इन्वाइट करते हैं। डॉक्टर डोमा जी नमस्कार, आप आइए और आज के विटिलिगो डे के संबंध में आपके जो विचार हैं, जो आपके जो सजेशन है, सुझाव हैं या जो आपके अनुभव हैं, उनसे हम लोगों को भी लाभान्वित कराइए। डॉक्टर डोमा जी नमस्कार। नमस्कार अग्निहोत्री जी। नमस्कार। सभी को मेरा विनम्र प्रणाम। As far as I expected, the Padma awardee has joined. That is also, I think, from Hyderabad. I think that he is from Hyderabad because I didn't hear up to He's from Hyderabad. He's here. Minutes. I'm very much here. Yes. I'm very much glad of you, Dr. Waheed, because you have joined. On one occasion, I referred your name also, that you are Padma awardee. Yes. By Narendra Modi. And the thing is this, Unani is much advanced in this line, strictly speaking, advanced in line. And whereas the variation which comes across in Unani and Ayurveda is nothing, only the terminology may differ. Where they say that burst, Safufe burst is made of Bakuchi only. Likely, it will be little differentiation of the terminology. And whereas the vitiligo I didn't hear because I was very enthusiastic to hear right from the speech of Dr. Waheed, right from the beginning, but I missed for 22 minutes. But Dr. Waheed, what is the more aspects which cause for vitiligo? If you have described in your speech, then I would have been very glad. Or now I am here to hear, and all to also. Please, what are the causes? What are the main things which cause for vitiligo? Excuse me, sir, please, for the sake of Dr. Doma ji, I request Dr. Waheed ji, please just take out some important points of your speech so that we all will be benefited. And I was recalling you, I found that you are not in list simply because of the feedback. So you please make these minutes valuable by giving your some suggestions and in the form of feedback, please, especially for us and for Dr. Doma ji. Thank you, sir. Since he is Padma awardee, that is why I am calling on him once again. Sure. Yes. He is to be invited first. So we please. You want me to talk again? Yes, sir. Thank you. Yes, thank you very much. You please, if you just increase your volume. I was having a little
sound problem just in It's case. okay now. It's okay now. Little better if you can. It's okay now. It's quite it. Okay, thank you, sir. Thank you. 1 minute. Let me check. Yeah, it's okay now. It is better. Please carry on. Okay. See, I will just explain you. There are 2-3 things I wanted to make you during the discussion. As Dr. Saab was mentioning that what is the cause of vitiligo. At the outset, I would like to inform you that there are many types of vitiligo. Each type has its own cause, own somatic appearance, distribution and extension pattern differs. And aggravation and the regression pattern differs. The regression pattern is in response to the treatment. So when we start treatment, for example, based on the classification, take any classification, like is a localized vitiligo or generalized vitiligo. Under the banner of the localized vitiligo, it is a segmental vitiligo and the mucous vitiligo. So for mucous vitiligo and the segmental vitiligo, it affects the area supplied by a nerve. It is always unilateral vitiligo and it is always localized vitiligo. There is a substance called, the modern concept is the substance called serotonin, which is secreted from the nerve ending, will continuously destroys the melanocytes. By and large, the rest of the generalized type of vitiligo, like non-dermatomal vitiligo, acrofacial vitiligo, and the vitiligo vulgaris, these are all by and large the autoimmune type of vitiligo. According to the concepts of our own systems of medicine, it is referred to the temperament and the cold and wet temperament that is dominant of the bulgamic temperament. So that will develop the susceptibility towards the development of vitiligo. We were talking about the role of diet in that. As I was mentioning during the conversation, that I'll give an example. I already told that, for example, a particular diet which is causing food allergies and incompatibility into the body is consumed by the 10%, 9 have not developed any pathological condition, whereas 1 has got. That means there's a susceptibility to develop vitiligo. Until we have a susceptibility to develop the vitiligo, probably will not develop the vitiligo. In such cases, we need to take a history and we need to advise during the course of treatment also. And in the post-treatment follow-up also, we need to advise the patient to follow the right restrictions. Could be no fish and poultry, chicken along with the milk products. And second point is, the most important is the sensitivity of the skin. As we all know that the sensitivity of the skin is genetically predisposed. That is to 6 different grades. Grade 1 and 2 people are always sensitive. And at the same time, we know that pigment melanin is a protective screen against the hazards of sunlight. When it is lost, that particular area become more sensitive to the hazards of sunlight. We have to have a little protection to that. Among the sensitive patients, not all among all. What do you mean by sensitive patient? That is with grade 1 and 2. That is to be clinically diagnosed by application of some drugs. Now the point is, we were talking about the blister formation during the course of treatment. See, the new knowledge has come that these blister formation is always an essential part of the treatment. Like my very learned professor was mentioning, that we need to not to burst that and keep for longer time. I am also of that opinion, because there are sulfahydryl compounds which forms and block the pigment formation. In the event of the blister formation and the collection of the serous fluid for a longer time, if you keep for a longer time, when it bursts on its own and come out, those blocking material also will come out. There are a lot of repigmentation will develop after that. But only precaution, because of the sensitivity, post bursting also there will be sensitive issues like itching and the dryness of the skin. We just need to apply the coconut oil, advise the patient to apply coconut oil in order to avoid the itching, so that to allow the skin to grow the repigmentation. That is one of the best things that I appreciate the efforts based on his clinical experience. And at the same time, thank you, sir. And it's very knowledgeable. Actually, I was observing that talk. Thank you, sir. Thank you. You seconded my stand. You seconded my stand, and my daughter, Neha, definitely will be obliged to have your words. Thank you so much. Thank you.
Thank you very much. And it is very useful in our clinical practice to advise the best, the practice to the patient. Second thing, we need to console the patient because of the sensitivity. Because, you know, despite, I'll give you another example in a different way, that despite you have a very good treatment model to treat vitiligo. You have a very robust treatment model and a very logical approach to it. But when the patient applies, patient gets the blister, he feels that is a reaction to the drug and they're likely to discontinue the treatment. Though, as we have a concept that it creates the blister, comes out, the sulfidal compounds or the blocking material, that will form a very good pitch for the repigmentation. So we need to explain the patient that there is no scientific test to do it as of now to test the skin sensitivity except for application. For that, what we advise our patient not to apply on all over the patches in order to test the skin sensitivity. We advise them to apply on one patch at least for 10 days to see the skin sensitivity. So based on our clinical experience, we will determine if he is under grade 1 or grade 2 sensitive. Then accordingly, we advise them not to worry about it, as and when there will be itching and burning or sensitivity issues like blister formation. Please bear, it's a part of the treatment and will going to benefit you in a shorter time. And the repigmentation will be definitely in a shorter time than compared to the other areas where patients have not either applied or the better tolerance we have. So this is a wonderful idea. So coming to the, again, back to my friend's question about the causation of the vitiligo. Number one is an autoimmune vitiligo. Second is the neuro concept as the segmental and unilateral vitiligo. Third, as I told during the course of vitiligo, is the fastest emerging type of vitiligo is a contact vitiligo because the contact with the cosmetics, poor quality cosmetics, lipsticks, bindi, use of gloves, use of recycled plastic ware, you know, use of another, even bindis also. Yes. So those are the very common things we come across in the day-to-day practice. We need to advise our patient and educate the patient not to use all these things. Again, the sensitivity part plays. I'll give an example of the sensitivity in a different way, which covers two things. One is a sensitivity, another is a role of diet and susceptibility towards getting the vitiligo. See, for example, I told you that somebody is playing and fell down, and after healing of that wound, that turn into the white patch, depigmented lesion. But as you know, in the world, daily 1,000 children are playing and get the injury, but after healing of that will turn into normal color. So one is not getting the color, regaining the color, another is regaining color. That speaks there is a tendency to develop vitiligo. That is nothing but the susceptibility towards developing this kind of depigmentation. The susceptibility refers to the autoimmunity. So autoimmune mechanism this autoimmune mechanism is correlated with pitta. So these are the few things we have to have in mind before really diagnosing. Number one. Second, selection of the patient is more important because the site of the lesion is more important rather than the extension of the lesion. At the same time, distribution of the patient and the extension of lesion is also matters. And these extension and distribution refers to the type of vitiligo. And the type of the vitiligo, as we were talking, non-dermatomal vitiligo, segmental vitiligo, acrofacial vitiligo, mucosal vitiligo, vulgaris vitiligo, and many other types also. There is a combination type of vitiligo also. So these are all referred to going back to the causative factor. There's a causative factor. Segmental is a unilateral vitiligo. This is a neuron origin. Chemical contact vitiligo is a chemical contact vitiligo, as we were talking about the emerging type of vitiligo because of the poor quality chemicals. Use of that chemical coming in contact with that particular area will lose the depigmentation because of the continuous contact will lead to the development release of the abnormal antigens which destroys the pigment cell like melanocytes. Second is the melanocyte, autoimmune mechanism with the large destruction of the melanocytes takes place. When we talk about the percentage of incidence of this prevalence of these particular types among the vitiligo patient, that is 70% of the patients will have a non-dermatomal vitiligo, around 11% will have segmental vitiligo. We have analyzed large pool of data which comprises of around as good as over 1 lakh patients. And thirdly, mucosal vitiligo is hardly 3 to 4%. It affects only the mucosal areas like lips and the surrounding of the other natural body orifices. And contact vitiligo is always contact like hands, finger, and that.
Now coming to the part of the irrespective of the type of vitiligo, irrespective of the extension of the vitiligo, irrespective of the cause of the vitiligo, treatment outcome. That is something very important with the doctor's perspective or the patient's perspective. So by and large, non-dermatomal vitiligo quickly responds to vitiligo. When we start the treatment, initiation of the repigmentation takes within 3 months of therapy. And segmental will slowly respond maybe at 6 months of therapy. And occlusive vitiligo will be always non-responder. And the areas like acral areas like fingertips, palm, feet, sole, toes, this is acrofacial vitiligo. This will be a partially repigmented. Now the point is, the patient's perspective, we need to have a cosmetically acceptable repigmentation. For example, a patient recovered to the extent of 70%. A doctor will be happy and say that my drug is very effective, my line of management is very effective. That patient has recovered the 70%. But across the table, when we see with the patient's perspective, the 30% problem is a problem, is a stigma, is a stigma. Patient is regarded as a stigmatized in our society. What is the next way forward? In that cases, what we can do is that we can have an integrated approach by doing some new surgical methods have come. We can take help of that. For that, there is a need to make a patient stable. And I was talking during my talk that stable vitiligo definition, I guess we need to have a medication to make it stable. Once it becomes stable, then is as good as I told you the 2020 MASH speech, which is very much result oriented. So we can make it stable. To make it stable, we need to have a different medication. All medication which contains like Soralia, Cardiophilia, Bawanchi and all will repigment. But because of the autoimmunity, we need to have an immunomodulators in addition to these two in our prescription to control the further spreading. Third and last is accelerated rate of pigmentation is always desired. So we can always have some method, as my predecessor speaker was talking. That is a very excellent approach in the vitiligo management. Hope I have answered. Thank you, sir. Thank you. Very nice of you. It's a great occasion, and we are fortunate enough to have such a great learner, our guest speaker, who enlightened us all. And sir, the one thing is which I could mention that with whole of my platform's consent, we can say that with a unanimous consent that Padma Shri, Dr. Waheed is the today's man of the match. So thank you so unanimous declaration that you are the man of the match. Thank you, sir. As you narrated the whole of the scenario in India, foreign, and you also quenched the thirst of Dr. Doma sir. So as we established and scheduled our time limit. At the same time, my feeling is we are all sailing in the same boat. Definitely, no doubt. But still, we have to appreciate others. We have to appreciate others. Then only the real will reflect us. So this is so your thank you, sir. Thank you so kindly. अग्निहोत्री जी 100% सही है. आज के मैन ऑफ द मैच ही नहीं, मैन ऑफ द सीरीज भी वही है. Thank you, sir. So with this, we have scheduled study itself that at about 8:30. It will be a closing time for our webinars daily schedule 6 to 8:30. So we have started at about 6:05. So it is 8:35, and we have covered the whole of the persons available here. And I do hope that as Dr. Domaji started knowing something from you, so he might have received the good information from you directly. I am sorry I was not locating you at that very moment in the list. The moment you on your video, it became my fortunate that definitely it was a slog over where you won your match. Thank you so much, and I am really fortunate enough that it's our privilege that I am talking directly to one person who is the Padma Shri Awardee or Padma Awardee. Thank you so much. So with these remarks, I will just return back this platform to Dr. Pawan Sharma ji for the further proceedings. Thank you, sir. Thank you. Over to Pawan Sharma ji. Pawan Sharma ji, आप mute हैं. Thank you very much, sir. Thank you very much. No clear voice. Today's webinar was really excellently brainstorming when good discussions were made. Ved Jayesh Thakkar, if I am audible to you, Ved Jayesh Thakkar.
Are you available? No clap. No clap. I hope he is not. So please join. पवन जी बीच में आपको थोड़ा इंटरप्ट करूंगा मैं। जी बोलिए। अग्निहोत्री जी और बस पूरी टीम के लिए एक अनुभव जो मैं बताता हूँ। हमारे एक साथी हैं रसशास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर भगवती शर्मा जी, और उनके पत्नी ने को गर्भ धारण हुआ। उन्होंने निरंतर सर 9 महीने केसर का दूध पिलाया। उन्हें केसर का दूध डेली बना के, और केसर और सीता मिश्रित। जब उनका बच्चा पैदा हुआ तो वो बच्चा पूरी तरह से भूरा है, एकदम, इवन उसके बाल भी भूरे भूरे निकलते हैं। तो अपन एक ये कि केसर से ऐसा क्या हुआ कि पिगमेंटेशन बॉडी का बिल्कुल ही उसका मैनर ही चेंज हो गया। क्या डोज ज्यादा हो गया या कोई ऐसा, क्योंकि त्वचा, रक्त और मांस और मेद, ये धातुओं का इन्वॉल्वमेंट है दोस्तों। चलिए तीनों इन्वॉल्व है ही, परंतु वो बच्चा अभी भी है, 12 साल का हो गया है। वो पूरी तरह से ये लगता है कि ये बड़े, अरे वो उसमें बड़े वो कष्ट में रहते हैं। उसके ऊपर उन्होंने काफी सर्च भी किया कि ये केसर से क्या हुआ। केसर से, एकमात्र केसर। सर भ्राजक और रंजक पित्त को कहाँ ले जाएंगे? उसने भी तो अपनी भूमिका अदा की है। अतिरंजित हो जाना, अतिरंजित हुआ वो, या अरंजित हो जाना, डिप्लीशन ऑफ पिगमेंट, और वो भी फॉर लॉन्गर पीरियड, 270 दिन 280 दिन लगातार कंटिन्यू रखा। अति सर्ववर्जित हमें देखना चाहिए था ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। अब इसका एक ही तरीका है, इस कॉम्बिनेशन पर हम एलिमेंट मतलब एनिमल पर कोई स्टडी कर सकते हैं। उसका तरीका ये हुआ कि ह्यूमन कॉम्प्लेक्शन वाले, स्किन वाले किसी एनिमल पर, अगर मैडम मेनका गांधी या उनका सोच ये था कि मेरा बच्चा बहुत सुंदर और गोरा हो, तो गोरे से ज्यादा अति गोरा हो गया वो। आपसे तो राय लेनी चाहिए थी कि कहीं क्लिनिकली क्या है, रसशास्त्र तो कर दिया। वो तो हम परीक्षा लेने गए थे, उनके घर गए तो बेटा देखा, फिर चर्चा हुई सर। तब उन्होंने ये एटियोलॉजिकल फैक्टर बताया, अदरवाइज तो जब हमने पूछा मैंने कि क्या हुआ है, नॉर्मल, बिटिया अच्छी है, सब कुछ नॉर्मल है, भाभी जी नॉर्मल है, आप नॉर्मल है, आपकी फैमिली हिस्ट्री में भी ऐसा कुछ नहीं मिला। बोले कि यार क्या बताऊं, मेरे को, मेरा शास्त्री था। सर उस बच्चे के बाद और कोई बच्चा हुआ जो नॉर्मल हुआ हो? हाँ, नॉर्मल बेटिया हुई, तो उसमें टोटली नॉर्मल। उन्होंने केसर नहीं केसर नहीं थी। फिर तो कान पकड़ लिए, फिर तो नहीं खिलाया ना। नहीं एक छोटा सा बीच में सर, मेरा एक वो था जिज्ञासा, यस सर, वो, परंतु अब ठीक नहीं हो पाएगा। निदानम परिवर्तनम हो गया ना, उसमें परिवर्तन हो गया। चलिए अच्छा है पवन जी, आप जी बताइए। अग्निहोत्री जी जी सर नमस्कार। जी सर, हाँ आपकी आवाज आ रही है जी, आ रही है। एक पॉइंट तो वाहिद जी ने, डॉक्टर अब्दुल वहीद जी ने कवर नहीं किया कि एट लार्ज इन इंडिया, आई एम नॉट टेकिंग द एंटायर वर्ल्ड, इन इंडिया which area people are much suffering from vitiligo in general. I'm not going to classification. That was not being covered, though I'm giving little information about this. He is here and he is listening you. Sir. Hello, sir. Should I interact? Yes, sir, please. During my presentation in the first lecture, I have already told around 0.5 to 1% of the world population, around 20 billion people around in the United States of America, and 3 to 4% in India. And within the India, the coastal belt has more than the non-coastal belt, and the incidence of vitiligo in the coastal belt of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Bengal, and Gujarat is more than the non-coastal belt. And when we have done the statistical, very classically designed survey in vitiligo in the twin cities of Hyderabad. Hyderabad has twin cities.
So we have done then 0.1 to 0.1.3% of the people do have, and we got it published also that in article. So by and large, the coastal belt has more incidence of vitiligo, prevalence of vitiligo than the non-coastal belt. Number one in India. By and large, India has now 3 to 4% of the population. And when you talk about the different cities, Delhi, there are studies, published studies shows around as good as 7% of the population is having in Punjab and Delhi and the North Belt. So likewise, Gujarat and other areas, very recent studies, survey studies are not there, but it speaks about 3 to 4% of the population is having, which I have already mentioned in my talk. I think, sir, this entire webinar is being recorded. You can send us the recording so that we can have a fresh look. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Sir, what about Rajasthan and Madhya Pradesh? Rajasthan and we have a patient base on across the world and across India and all parts of the India. Rajasthan, we have a highest. Gujarat, we have a highest. Madhya Pradesh, we have a highest rate of patients. Right. This was in my mind way back in 1980. Dr. Bal Roga Sharma told that Rajasthan and there are some communities where it runs from decades. There are certain there are two things again, sir. One is a certain communities are having, that is a genetic susceptibility. Right. Now we talk around 13% of the people have a genetic susceptibility, whereas 87% does not have genetic predisposition. So now the point of question comes up about autoimmunity, as 70% of the vitiligo patients are of autoimmune origin. So this is mostly because of the lifestyle, environmental factors, food habits, all this contributes. Yes. Both the causation and aggravation of lesions. Thank you, sir. Thank you. Agnihotriji, yes, please. Agnihotriji. Out of that, a general saying is there. If you want to go to see a bride in Gujarat, first you will observe that whether she has developed white patch on her body or not. This is a general saying along back. And out of this, one I am giving to, I am presenting out of my Gurudeva's pravachanas, that he said that the development of vitiligo is much general, not in observation, that people are practicing very irrationally. They're taking oil food and drinking water, like puri करे हैं और फूल गया, much oil is there, they are taking, and at the same time putting glass of water in the mouth before digesting the food. That means oil food. If they consume and they intake water, then it is every opportunity of developing vitiligo. तो ऐसा उनके प्रवचन में था. और दूसरी बात जो है, जहां सर्जिकल के बारे में अभी डॉक्टर साहब ने बता रहे थे कि वहां पर आई से दैट आउट ऑफ so many medicines in Ayurveda, Udayaditya Ras, I prescribed so many, and Swayambhu Adi Gugul, Kaishora Gugul, out of all these is Udayaditya Ras with the combination of Swayambhu Adi Gugul and Saribhadrashta along with Arogyavardhani is given, then that will be much effective. And in initial stages, Arogyavardhani with Saribhadrashta, it itself is sufficient. Where there is loss of much pigmentation, then it requires. And one more thing is this, here before going to the treatment of vitiligo in Ayurvedic system, what I observed, first उन लोगों के लिए क्रिमिक ने अगर विरेचन कर दिए, जैसा विडंगारिष्टा इसके साथ और क्रिमिकुटार रस ये दे करके अगर पहले उनका विरेचन कर दिए, तो उसके बाद ये ट्रीटमेंट शुरू करे तो रिजल्ट थोड़ा बेहतर तरीका से मिलता है. मैं ऑब्जर्व किया हूँ मेरे प्रैक्टिस में. और whereas about I myself observed putting subfoveal bursts of hamdard and patches when they develop blisters, never I asked that it is harmful, and I asked them to put as it is and suppress, then there will be much developing the covering of the patch. It is perfectly what अग्निहोत्री जी आप पहले जो बोले ब्लिस्टर के बारे में वो खराब नहीं है. ब्लिस्टर actually it itself gives result. Like thank you sir, thank you. वो बिटिया अभी छोटी है ना,
असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसको तो अनुभव की आवश्यकता है, इसलिए मुझे बताने में कोई संकोच भी नहीं हुआ, कोई हेजिटेशन नहीं है। और ये सोच के कि मेरा अपना अनुभव है, मरीजों को लाभ पहुंचा, तो मैंने बतलाया। अब आप लोगों ने उसको प्रमाणित कर दिया तो मेरी खुशी और दुगनी चतुर्गुणी हो गई। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी परफेक्टली आपका भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। जहां पर सर्जिकल साइड में रेफर किया डॉक्टर साहब ने, वहां पर अपन तालक का प्रस्ताव नहीं करे इस बीच में। स्किन डिसीज में तालक का जो प्रस्ताव होना चाहिए, तालक भस्म नहीं होता है इसमें उपयोग, तालक सिंदूर, क्योंकि सिंदूर का जो प्रिपरेशन सिस्टम है, डेवलप्स पिगमेंटेशन। एम आई राइट अग्निहोत्री जी? That is why Tal Singh Sindur also, because I didn't prescribe to anybody because they have to observe much diet restriction while using Tal Sindur. It's not a joke. For in general public, I never prescribe. And if at all a particular patient who insists, then I used to for a chronic cases. And likely where these things are rolled on, and with the combination of Ayurvedic system and Unani, both will exchange one and all. हम लोग इसमें जो है डिफर नहीं कर सकते हैं। और एट लास्ट अगर कंक्लूजन में देखें आज के सबमिशन से, तो वी हैव टू कंग्रेचुलेट डॉक्टर अब्दुल वहीद. On one occasion, I am reminding also this also. I am not criticizing any therapy also. On one occasion, there was actually in Charminar Hospital itself, there was a big celebration for this only. Out of these people, different therapies, they have assembled there. I think modern medicine people have joined. I do not know because Dr. Abdul Waheed, he himself is giving evidence. But out of them, one therapy people referred that whichever thing aggravates the disease, that itself cures the disease. Because if I take, it will become a biasness of the therapy presentation, then immediately I think Unani people are somebody rose and immediately tell that, for example, a patient of vitiligo being served some medicine which aggravates by giving medicine, that itself cures. If he becomes Silver King, can he be cured? You see, Dr. Domaji, you see, there is also really a social problem. A person who was having a vendor of Golgappa, and his fingers are having the same type of vitiligo hither and thither, and he was providing a full water Golgappa to the customers. So they refused. The moment they saw their hand, and they found, it may be problem. Though it is not a contagious disease, or it may be because of the repeatedly touch of acidic water, that Golgappa water, that Golgappa pani puri. So it may be happen. So this is a social problem also. So with these words, we came to the, sir, thank you, Dr. Domaji. And here, little more. That the thing, that what my reference was, that a medicine which aggravates the disease, it itself cures the disease. It cannot be applied here. It cannot be applied here in case of vitiligo, what I feel. Because that presentation was there, in that only, out of those assemblies. This principle is there in homeopathy. This principle is there in homeopathy. The same thing, homeo representative, homeotherapy representative, Dr. Hussain maybe, he referred like this. Because out of much not having evidences, then he said that which medicine it aggravates the disease, then it itself cures. Every medicine and their pathy representative has got their own kriya kal. They are all having their line of treatment and mode of action. So this is their view. This is their pathy. So they have nothing to interfere, and they have nothing to comment upon. No, because it was not like that, Agnihotriji. There should be rational thinking. It was actually Hahnemann theory. It was Hahnemann theory, but there should be a rational thinking out of this, because anybody can comment on this, because that cannot be applied here like that. It is going on. With this, I put forth my thank you very much. Yes, thank you, sir,
for your wonderful remarks and discussion. So with these words and in this way, we have completed our panel discussion along with all our speakers' presentations and their viewpoint. So I just send back to Dr. Pawan Sharma ji just to save minutes, and we have crossed almost 8:30 to even 8:50. Dr. Pawan Sharma ji, now the again platform is yours. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. आज तो ये लग रही थी चर्चा चलती ही रहे. हाँ, आज तो हम खींच के कंट्रोल पे ला रहे हैं, so that कल आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो आज समय से हम अपना विसर्जन भी कर लें सबको. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. सभी की शुभकामनाएं हैं, इसलिए कल 400वीं पायदान पर हम पहुंच रहे हैं. आप लोग प्लीज जुड़िएगा. प्लेटफॉर्म आपका है, मंच आपका है. आशीर्वाद इस मंच को जरूर दीजिएगा. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. शुभ रात्रि. सिर्फ 1 मिनट का समय हम इसलिए लेंगे कि हमारे जितने अतिथि आज हमसे जुड़े हैं उनको बिना उनका आभार व्यक्त किए कैसे जाने दें. तो हम ये कहेंगे कि आज हमने 399 भी वेबिनार नहीं बनाई. आज हमने 1,400 वेबिनार बनाई है. 1,400 वेबिनार बनाई है और हम 400 के एक कदम बढ़ाने पर के पास हैं. तो इसलिए इस उपलक्ष्य में हम प्रोफेसर सीवी झा सर गुरु जी का, प्रोफेसर बीपी शर्मा जी का, डॉक्टर पवन कुमार शर्मा जी का, मोहम्मद अब्दुल वाहिद सर का, डॉक्टर इंद्रजीत बनर्जी जी का, डॉक्टर मोहसिन देलवी जी का, और डॉक्टर प्रीति बनर्जी जी, डॉक्टर हरीश वर्मा जी, वैद्य जयेश ठक्कर जी, डॉक्टर जगदीश्वर डोमा जी, डॉक्टर कामिनी धीमान जी, डॉक्टर पीके द्विवेदी जी, और डॉक्टर दिनेश कुमार दास सर, एंड हमारे डॉक्टर DK श्रीवास्तव जी, और उसके साथ साथ हमारे मोहम्मद अब्दुल वाहिद जी, रुचि डॉक्टर तेजेंद्र सिंह जी और नेहा जो गर्ग जी, इन 3 गेस्ट स्पीकर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं. उनका विशेष रूप से हृदय से अभिनंदन करते हैं. उन्होंने आज का जो ज्ञान वर्षा हम लोगों पर की, जिससे हम सब सोए हुए फिर से जागृत हो गए. और विटिलिगो के क्रम में जितनी इन्होंने अवैध राजन पटेंकर जी स्पेशली जितनी उन्होंने 40 साल की अपनी जो तपस्याएं थी, उन सबको आज एक सूत्र में बांध के सबको एक दूसरे के ज्ञान को दिया और लिया. इससे हम सबके हृदय से आभारी हैं. राजन पटेंकर जी शायद कुछ लास्ट वर्ड कुछ कहना चाहते हैं. अग्निहोत्री जी, अभी जैसा आपने कहा कि 1 short of 400, तो ऐसे मैं जो क्रिकेट का बहुत शौकीन हूँ, तो जब भी पहले सुनील गावस्कर बैटिंग के लिए आता था और वो 1 रन बनाता था, तो वो टाइम पे जो हिंदी कमेंटेटर थे सुशील जोशी, वो कहते थे कि गावस्कर इज 1 short of 99 short of 100, ऐसा वो कहते थे. He is towards century. He is towards century. He has started. He has opened his account. तो वैसा ही कल का भी है अपना, मतलब 1 short of 400. तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी. इसके लिए अरे हम तो ऐसे ही बोलते हैं, आप लोग आशीर्वाद से. नहीं, आशीर्वाद नहीं है, हम लोग सब साथ में है, तो आशीर्वाद का इसके कोई सवाल नहीं है. यस. ओके. सो काइंड ऑफ थैंक यू पवन शर्मा जी की तरफ से और हमारी तरफ से इस वेबिनार प्लेटफॉर्म से सबको, आज के अतिथियों को, सबको, महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद. शुभरात्रि. नमस्कार. शुभरात्रि. पवन जी शुभरात्रि. शुभरात्रि. शुभरात्रि.